Yeah, good evening, everyone. So basically, we will begin with the personal administration and civil services. So it's a very important topic. Why these questions? Most of the topics that we are going to cover here, they will be used in the GS2 paper and GS4 paper. Okay, and even the public administration, most of the aspect like the organizational theories that we have read, even the administrative behavior we have read, or the other aspect of administrative reform, whatever administrative reforms are needed, everywhere these topics or concepts are going to be repeated. Okay, so again it becomes very important how the ideas of personnel working in the organization. Okay, so this topic will be very important for because of its utility in various segment. Okay, how the idea of work, work people working in the organization has undergone changes. Okay, so those are the aspects that we are going to cover. Before we proceed, anything to ask? Anyone want to discuss anything, or should we Sir, can proceed? we please see the PYQs first? Okay, okay, good. Any other suggestion? Good, we can look at. It's a good suggestion. Most of the questions are see, they are not getting into the too much detail. Some aspect will be detailed, where like the training का aspect है या performance appraisal का है, उस पे आता है. Otherwise things are very straightforward. For example, in the contemporary time, questions have been asked importance of human resource development. Okay, so in this topic, what is how the idea of human resource development has evolved or changed in the contemporary time, why it is important. So the most of the questions that you see, and most of them are very much generic, macro in aspect, and they are not asking the micro level questions like the environment and situational condition under which the government operate have an important bearing on its human resource development. अब देखो इकोलॉजिकल रिस्क का जो इकोलॉजी है ना, रिस्क का इकोलॉजिकल फैक्टर, अगेन यू कैन रिलेट how the environment, the ecological factor, the situational factor, and the ideology of the government, political system, social system, how they have important bearing on the human resource development. So you have to examine how it is impacting, why it is impacting, है ना. So those aspects, general questions. Then second is administrative reform. What is administration? What do you mean by administrative reform? They have defined it is an general artificial inducement of administrative transformation against resistance. Okay, this is a statement of some Caden. And then nature of resistance, why there is a resistant to reform process, again general question. And then what are the inducements which are required to overcome it, what are the problem in bringing the reforms, and what are the solutions direct. If you are ever aware of this, if you prepare this thing, then you can easily write the answer, nothing to worry about this specific statement. Okay, the next question is, in the absence of merit based fair and objective system, a more partisan and corrupt government will emerge. Is the statement justified? And give reasons. Again, can you recall just the Woodrow Wilson? Why Woodrow Wilson come up with the idea of merit-based public administration? Why there should be merit-based selection? Why the administration and politics should be separated through the dichotomy concept? Again, you can connect the theoretical aspect here also. Why? So again you can bring out, that's why why this idea of dichotomy came up, because he wanted to depoliticize the administration. He wanted to have a merit based system, objective, talent should be respected, everything should be done in transparent manner. So he was against this partisan or a spoiled system, what we say is a partisan or a spoiled system. So again, see, the questions are related to chapter 1 also, and a very, even administrative reform, Woodrow Wilson idea was to reform the American administrative system, so that how to run the government efficiently, what are the reforms which are needed. And the Rick's idea of ecological or situational factor, the basics. That's why most of the topics that we have covered so far, they are very conceptual in nature. You should have the multiple division of those topics. If you have the command over them, most of the answer, even just if you are having the keywords of other chapter, then also you can write the best possible answer. Okay, so that is that, see the things how they are related. And then various component of human resource, what are the human. So these are, see, this is also a generic type of questions. Human resource management का क्या क्या aspect है, component है, and then how they are interrelated, how it is a cyclic process. Recruitment है, training है, performance appraisal है,
है ना, recruitment, training, then ना performance appraisal, then transfer, posting, promotion, salary, everything is interconnected, interrelated. You have to show it the linkages. ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चंस लास्ट है ना 5 साल 10 साल में आए. And then other topic is recruitment. See, on few occasions that questions has been asked, especially when it was in the news. For example, lateral entry was in news in the 2017 and 18. So direct question has been asked. If it is in the news, there is a possibility. Otherwise, questions are not directly asked on the recruitment topic. So recruitment lateral entry, whenever there is a debate, once you come across current affairs, if there is a debate, what are the reforms that government has brought in the recruitment process? So then only the possibility of questions comes here, है ना? See, you can see last 5 to 10 years, very, one or two questions have been asked. So no direct question, directly, the relevant or dynamic aspect, because it is very conventional topic. Okay. Then second is training part. Training is also not similar to recruitment. It is not very matlab, if it is in news, or there are some committee which make some observation on the training aspect. Like we have the mission Karmyogi, and currently mission Karmyogi is that it is related to training. So the question is likely to be asked in the training aspect, mission, how on job training, or what are the features of mission Karmyogi, to what extent now, at also already 2-3 years have passed. So how the mission Karmyogi has impacted the efficiency and performance of the administration, what are the key features, examine the applicability or benefits that it has brought mission Karmyogi. So those are the questions that is important. Otherwise, mostly the conventional question is they link with the even the T group training that we have read in the participative management thinker. Okay, training is a paid holiday. Why it is considered paid holidays? So again, the topics that we are going to cover, the basic static portion are all very well covered by the in the notes. Okay, dynamic aspect, you have to keep some vigil on the current development. And then career advancement, nothing much is asked. Only problem will be state services versus all India services, how the state civil servants are promoted to the all India service. So those are the state civil servant, how they are related to all India service. Has all India service has curtailed the growth of state civil services, है ना? So to what extent they are interrelated, interconnected, the how 33% many of the states they promote the state civil servant to the all India service, how those process. So basic idea, even if you have, whether they are complementary, they strengthen each other or weaken it. Many times questions can be asked, all India service has weakened state civil services, or it has strengthened the dynamism of all India service, because state civil servant have lot of local experience, and they come up with a lot of local, regional, ecological experience, and that enriches the quality of all India service. But it also come up with this lot of baggages and localism, son of the soil factor. Again, those are impacting the all India nature of civil servant. Those kind of questions could be made in a dynamic way. Okay, that is a possible. And then ये तो पोजीशन क्लासिफिकेशन अभी क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बट दिस कैन बी आस्क्ड, बिकॉज विड्रो विल्सन जो अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे क्या एवरीथिंग शुड बी, ऑल द पोजीशंस, रोल, रिस्पांसिबिलिटी, स्किल्स रिक्वायर्ड, एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड, and based on that only payment should be done. So what is difference between position and rank classification, that we will see, because those questions have been not been asked in the last few years. ठीक है, तो discipline performance appraisal. So this is dynamic topic. Many times government come up with a lot of new initiative. Disciplinary actions are taken, and performance appraisal also government has made lot of initiatives. So this becomes very important topic. Okay, the questions have been regularly being asked in this topic. For example, performance problem are rarely caused by the lack of training, and rarely can be improved by improving the training alone. Means performance, ultimately what was the objective of all the organizational thinker? They were concerned about the improving the productivity, economy, and productivity of organization, how the performance of individuals in the organization can be improved, how the performance can be improved. So various strategies have been suggested. Do you think the all the thinkers have only talked about training, or there were other aspects also to improve the performance? Obviously, once you think holistically, you can easily get the answer of most of these questions by the thinker's opinion one. Okay, so that's why they are asking you to critically analyze, highlight the significance of training, and then also highlight how other aspect, that to improve the performance. You can bring risk ecological factor, system theory, contingency theory. You can bring the
party PMT thinkers opinion or human relation thinkers. So multiple other things are there. You can refer 2 3 thinkers and then theoretical aspect. Then performance, it need to be seen beyond the suitability of official for the vertical promotion, है ना. तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, पीटर्स प्रिंसिपल है कि everyone is promoted to the level of incompetence. तो again how performance appraisal, what are the problem in the current performance appraisal strategy. So it needs to be seen beyond the mere suitability of official for the vertical. So it has to be much more the 360 degree or 720, those framework. So those are the current aspect that you can bring out. That's why it is important to so beyond this vertical promotion strategy simple ek aage karke there are new strategies which have come up. ठीक है. Then we have a performance management framework enable clear line of sight between the planning, measuring and monitoring performance. So how the framework to measure the performance of officers are created, that aspect you have to discuss. See the performance management part very important, that will see it very clearly, है ना. काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें. फिर पे प्रमोशन है ना, पे कमीशन आता था, क्वेश्चन आता था, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड. Then employer relationship, है ना, this can be I think recent to 23 also they have asked one question, है ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में. तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जब भी है ना कंट्रोवर्सी आता है या कोई है ना डिबेट चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो दैट समटाइम्स क्वेश्चन से इज व्हाटलिज्म क्या है, व्हाटली काउंसिल क्या है ना, हाउ इंडिया हैज JCM मैकेनिज्म, जॉइंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म. तो दोज आर द एस्पेक्ट दैट विल सी. ग्रीवेंस रिड्रेसल, है ना, क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड normally but it can be applied in the ethics paper, GS4 paper. Code of conduct, again it is important Sir, for. Yeah, please. sir, with all this EWS thing going on, Mm-hmm. can there be question in this context, the grievance redressal mechanism? Because now there is intervention of Supreme Court also. Yes, of course, even there's with related to pension, old pension, new pension, those are also grievance of, they are protesting it, or there are issues of safety. Nowadays what is happening, the contract, a lot of competitive, how the public and private employability could be synchronized. So there are a lot So of now features. the EWS one, and with the number of attempt increase, all that is going on. That is Is for there a recruitment. possibility of Yes, these things, factors reflecting in our question paper, or are normally these very vital? no, these are not. From the public perspective, may not be much. Though it can be related to recruitment. Merit aspect, has will it compromise merit or will it strengthen merit? So that is too micro aspect. If that is not a possibility in PubEd, it will become too controversial type question. And a polity section normally we can get, but you can use the idea of EWS. The idea can be used here. So ठीक है. whenever you do so, please explain the EWS case also in short, because there's too much of confusion around it. See, no, that okay, we'll discuss it if it is there. Otherwise, normally questions will not be asked in PubEd, है ना. EWS वाला question नहीं आ सकता. Rare possibility is there. Okay. And then code of conduct, ethics के लिए भी important है ना. Though the questions are not regularly asked, but it becomes the content administrative behavior जो हमने पढ़ा, है ना. And then merit based system, neutrality, waiver का जो waiver in bureaucracy idea, that idea has to be related here. So things are repeated. Most of the things organization में जितने भी aspect है ना, administrative ethics questions are regularly asked in this topic. ethics में अपन पढ़ते हैं, GS4 में भी पढ़ते हैं, public service ethics क्या है. And then जो relationship होता है सिविल सर्वेंट और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का, उसमें क्या है, एथिकल वैल्यू को कैसे है ना, मिसकंडक्ट को कैसे बचाया जाए, कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है. So those the questions are regularly asked. Administrative ethics, this is very important. Okay. And then most of the questions that we have seen, they are generic in nature, and the only thing is you should have the macro aspect. Civil services का भी थोड़ा देख लेते हैं. The constitutional position है ना, तो वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, मतलब जो भी एक्चुअली जो सिविल सर्विसेज का है ना, टू मच सिक्योरिटी दिया है, वेदर we need to modify the article. Those are the questions which are conventional debate. Normally the questions are asked. the last 2019 में आया, उसके बाद नहीं आया. तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो आर्टिकल्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना. ओनली यू हैव द बेसिक्स, देन आल्सो यू कैन
राइट द आंसर। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट है ना, तो वहां पे भी अपने देखे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग करंट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव मिशन करेंगे, तो क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। लेटरल एंट्री 17 16 17 17 18 में पूछा, यहाँ भी पूछा है ना। देन वी हैव द ट्रेनिंग, गोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग, क्योंकि मिशन कर्मयोगी का डिबेट चल रहा था है ना 22 में, तो वो है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ गए। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इन द दे हैव बीन इन द न्यूज, lateral entry or mission karmyogi, they have been in the news, that's why the questions are being asked on a regular basis, on a alternate year और हर ईयर आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इंडियन अप्लाइड एस्पेक्ट में हम लोग जो देख रहे हैं। फिर ऑल इंडिया सर्विस वाला जो एस्पेक्ट है, तो बाकी तो पुराना हो गया। देन गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है, तो अगेन दिस विल लीजिए दिस इज गोइंग टू बी आस्क एवरी ईयर, अल्टरनेट ईयर, क्योंकि ना गवर्नमेंट हमेशा गुड गवर्नेंस के लिए कुछ कुछ नया इनिशिएटिव, व्हाट आर द न्यू इनिशिएटिव्स, राइट सम एग्जांपल, कोट सम केस स्टडी, दैट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, व्हाट आर द गोल्स है ना, रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है, तो राइट सम एग्जांपल। सेवोत्ते में स्कीम क्या है, इनेबलर फैसिलिटेटर रोल, हाउ इट बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द इंस्पेक्टर और कंट्रोलर रोल, यानी नेचर ऑफ स्टेट हाउ इट हैज चेंज एंड हाउ इट इज now we are more focusing on enabling role of state facilitator role। तो again it is related to the paper 1 chapter 1 जो हमने chapter 1 में देखा ना, theoretical development of state, how the nature of state, how the scope of administration has changed over a period of time। so even if you have the basics you can write that, है ना। तो बाकी some सर्वोत्तम स्कीम है, तो specific few contents are required, otherwise chapter 1 content also if you are preparing well then also you can write the answers, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में है ना कई बार अल्टरनेट ईयर में, ये एथिक्स में हम लोग पढ़ते ही है, डिटेल में पढ़ते हैं, तो यू कैन रीड इट फ्रॉम एथिक्स आल्सो, यू कैन यूज हियर, और यहाँ का कंटेंट वहां भी यूज कर सकते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है ना, तो वही है कि अभी न्यूज में ज्यादा अगर नहीं आ रहा है तो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस आर, तो दे हैव बीन, जैसे प्रगति इनिशिएटिव था है ना, तो ये नया इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट है आज के, and then there are also some of the civil servant have come up in the media and they have expressed their grievance, social media पे अपना पोस्ट कर दिया, again the question could be asked if that if things have been in the news, ठीक है। what are the grievance of civil servant, civil servants activism हो रहा है, whistle blowing हो रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ गई, डिबेट आ गया, कंट्रोवर्सी आ गया, देन आल्सो इशू, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगेन अल्टरनेट ईयर है ना 19 20 21 तीनों साल क्वेश्चंस पूछे गए। तो civil service activism, do we need activism or neutrality, how the balance can be established, so what is the why rational neutrality is important, why civil service activism is important, new public administration को connect करना है और Weberian bureaucracy को connect करना है, then also you can write most of the answer। neutrality जैसे मैक्स वेबर है, विडो विल्सन है, and then activism में new public administration, new public service का जो idea है, if you are using that that will set your basics foundation for this answer, ठीक है। ओके सो आर यू ऑल एबल टू गेट, है ना, ये जो क्वेश्चंस है समझ आ रहा है कुछ, कि मैक्रो थीम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। Yes, sir. Excuse me, sir. I have a question. हम्म, या प्लीज, या यू कैन आस्क, आई थिंक यू आर म्यूटेड। सर मैं ये पूछ रही थी कि GS2 भी जैसे मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा नहीं है, और इनफैक्ट पेपर 2 भी मेरा ज्यादा अच्छे से कवर्ड नहीं है, तो सर मैं किधर से कंटेंट अच्छे से अपना एनरिच कर सकती हूँ? देखिए देखिए फॉर ऑल ऑफ यू इन जनरल दिस इज अ कॉमन क्वेरी आल्सो, there are a lot of topics which are overlapping between the GS and PubEd, okay, so what should be your strategy, what you have to do, you have to filter the topics from the GS and PubEd which are common in both, okay, all the topics you should have the list of all the topic, a specific topic, and then prepare short note on the topics, है ना, हर टॉपिक पे आपको कुछ कंटेंट तैयार करना है, and whatever value addition you are doing, do it at one place and revise it multiple times, otherwise what happens, things are you are preparing the same topic in your GS part, in your PubEd part, but if their things are not at one place, what will happen, you are likely to not remember all the things at one place, so try to which are especially paper 2, GS paper 2 or GS paper 4, and then PubEd paper 2, so very much that is very much related to GS, only whatever things theoretical part that we have covered already in the paper 1, most of the things are will set your background of the questions or framework, or you can think theoretically, but most of the applied aspect are related to GS part, so you can make the common list of common topics and then prepare short note accordingly at one place, that will be that will save your time and enrich GS content will enrich your
PubMed content, and PubMed content will enrich your GS answer. That is how you can prepare. And then again, Sanvas sir is already agreed to, he will be taking the some of the topics of paper 2, PubMed paper 2. So we are planning to have few sessions by him. Maybe next 4 week, he will be taking, and we are trying, we'll reschedule the all the dates that we have mentioned. Next 4 year, next 4 week, I think, next 4 week, sir will be taking Monday, Tuesday, plus Thursday and Friday. He will take 4 class. On Wednesday, you have the PYQ session. Okay, so what we are planning, some of the classes will be conducted in December, and we'll also take some class in the January session. So we don't have to rush through. You'll have enough time to revise things. Also, you can practice, you can make short notes. Thank you, sir. This will be a great help because it was getting too much. No problem. But the most important things, most of the things have been covered. जो theoretical था, अब क्योंकि applied है, you need to relate, a lot of interlinkages has to be developed. So you need time to think over it and then absorb the ideas. Practical, current affairs, everything will be interlinked. तो सर क्या करेंगे, है ना? तो you'll have 5 days class in a week till first week of January. Okay, next 4 week, sir will be taking Monday, Tuesday, and Wednesday. You have the PYQ session. Thursday and Friday, 2 classes. That means 5 class per week, 5 day per week. And then you are getting 2 days to revise, and whatever topics that anyone have, some of you have missed it or not covered, you can cover remaining topics. And once after the first week of January, in the January, I will be taking remaining topics. If things are required, I will also make you revise. Nothing to worry. Everything will be done here. Okay. Okay, sir. हाँ, ठीक है फिर, है ना? So we'll share the updated schedule in the group, maybe by tomorrow, or from Monday, sir will be taking class. Okay, Monday to Thursday or Friday. ठीक है. And remaining, whatever topics, sir paper 2, some topics sir will be taking, and some of the other topics that I will be taking in the month of January. Some topics will be covered in December, and other topics will be covered in January. You don't have to rush through. Most of the theoretical part have already been covered. Now things are very much applied. You can relate it. A lot of time will be there to relate it with the GS topics also. Then you can engage. Okay. Yeah, I think, can we proceed now? Yes, sir. Yes. Okay, thank you. So अब देखो, most of the things, theoretical part, whatever we have read in the organization, what we have read, how the organizations are created, why the organizations are created, what is the objective of organization, है ना? How the common goals are set. For example, Government of India is a big organization. If you consider Government of India as a big organization, there are different individuals who are working in the Government of India. Then how they are recruited, how recruitment of the staff takes place. All of you are preparing for UPSC, how all India servants are recruited, how the specialized services are, or how the state level employees are selected. So recruitment will be there, training will be there, then posting, transfer, payment, and then performance appraisal, and then how the relationship happen. So if you consider Government of India as a big organization, and along which also, for example, contain a state government or all the public servants, how they are recruited, how they are managed, how they are motivated, what are the incentive for them, why people come to government servant, to public private का क्या difference है. So again, those are the aspects that will be covering. Personal administration, all the thinker, most of the thinkers that we have read in PubMed thinker का objective क्या था, कि organization में right person at right position, how the recruitment should be done. Taylor talked about training, है ना? Scientific training होना चाहिए. Then there should be science of doing work. So those are the techniques we have. Techniques of administrative improvement में टेलर का आइडिया देखिए. Now in personal administration, organization के अंदर, hierarchy के अंदर, लोगों को कहाँ fit किया जाए, where the right person should be placed at right position, what are the skills which are required for a different positions, how the recruitment can be done. So what kind of training changes should be made based on the changing needs of the society, how the performance can be measured, can it be quantified, what are the objective and subjective aspect of analysis of performance, those aspects. And then what are the contemporary debate, there is a moral degradation. For example, there is lack of lot of corruption, inefficiency in the administration, how those aspects can be removed. Then Rick's idea of ecology, how the ecology is impacting the working of organization.
Okay, Woodrow Wilson, Riggs, they are going to be, and then we have the Max Weber. Many of those ideas will be repeated here, you know, if that they will set the theoretical background of this topic. Okay, Woodrow Wilson, beginning with Woodrow Wilson to the classical thinker, and then PMT thinker also, how behavioral change, because administrative reform chapter is also connected with this. If you have good command over here, you can use those ideas everywhere. Okay, इसमें हम लोग देखेंगे आइडिया ऑफ पर्सनल हाउ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. पहले क्या कॉग इन द व्हील माना जाता था क्लासिकल टाइम में, तो उसको मशीन की तरह ट्रीट किया जाना, कोई फ्रीडम कोई इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं. नाउ द आइडिया आफ्टर एल्टन मायो, है ना, एल्टन मायो का जो ह्यूमन रिलेशन डेवलपमेंट थ्योरी आया, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आइडिया ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज. व्हाट आर द चेंज पर्सपेक्टिव, व्हाट आर द चेंज मैनेजरियल कॉस्मोलॉजी इन द कंटेम्पररी टाइम, है ना. Then we have career advancement. What kind of career advance, what are the opportunities, for example motivators of Harjberg, है ना, how the job enrichment idea that you can use. Then what are the promotional avenues, how the individuals are promoted in the civil services. Then position classification versus rank classification. Okay, what is the difference, why every position has to be, what are the skills which are required for a particular position, what are the qualifications required, what kind of training should be given, what are the performance appraisal strategy in a particular position. In especially in the United States of America, they are following position classification. Country like India and UK, we are following rank classification. What is the difference, what are the advantage and disadvantage of both, so you have to correlate. Then training part, recruitment, how recruitment is done, whether independent merit based recruitment is done or not. Okay, then training, mission karmogi or lavasana foundational training, whatever training is being given. Then we have to assess the performance, how you are going to measure the performance of the bureaucrat. Suppose you will become officer tomorrow, how your performance should be assessed, evaluated as an IS officer. What are the strategy, what are the changes which are required, 370 720 degree kya hai performance appraisal, how the traditional performance appraisal strategy has transformed, quantitative से qualitative की ओर कैसे जा रहे हैं, how there should be mix of quantity plus quality. तो those are the earlier annual confidence in report होता था, to that performance appraisal strategy. And then there are a lot of demands for pay and service conditions. Okay, what are the features, what are the facilities which are available to the bureaucrats. Okay, and then we have the code of conduct, code of ethics, kya hai, professional code, civil services conduct rule, so what are the punishment for violation. And then we have the relationship, employer is government, and then employees, all of you are going to become employees of government of India. So what is the relationship, is it cordial, is it conflicting, why, if there are grievances of any employees, what are the way out, है ना, चाहे जेंट कंसल्टेंसी मैकेनिज्म हो या व्हाइट लेक काउंसिल का कॉन्सेप्ट, है ना. यू और फिर अभी ट्रिब्यूनल, है ना, कैट और सैट वाला जो आइडिया है कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके क्या ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है, एथिक्स का क्या है ना, इन जनरल ऑल द थिंग्स, because especially in the contemporary time it is becoming very important. That's why we have a special paper GS4. ठीक, उसके पेपर 2 में और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमने देखा, आर्टिकल कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया सर्विस का क्या रेलेवेंस है, इज इट, व्हाट आर द इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल इंडिया सर्वेंट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस. अलग अलग फेज में हम बांट के अब एनालाइज कर सकते हैं. रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इंडिया में क्या प्रैक्टिस है, मिशन कर्मियों भी क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, अगेन conceptual aspect will be used here. Political right, what are the political rights which are available to the civil servant, how the disciplinary measures are being taken against the bureaucrat. indiscipline के स्टाफ एसोसिएशन, व्हाट आर एसोसिएशन दैट आर अलाउड, है ना. तो ग्रीवेंस रिड्यूसल वही सेम आइडिया, एक्टिविज्म और जो न्यूट्रलिटी का डिबेट हमने देखा, और गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव. क्वेश्चंस आर डायरेक्टली आस्क्ड एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ऑन दिस पार्ट. ठीक है. चलो, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट पर्सन एट राइट पोजीशन, दिस इज द philosophy of this topic also. कि suppose whatever skills you have, you should get the right opportunity so that you are able to fulfill the objectives of organization, whatever organization you are joining. Okay, so that is the personal people in the organization. So that traditionally what we are saying, classical era, cog in the wheel, physical entity, entire process was mechanical. You are just like a cog, no initiative, no application of mind, you should just apply whatever you are being told. That was the mechanical opinion. Then we have seen the behavioral era. In this, what we have seen personally, that it was entire process. That means human relation management or human resource. That means human relation, एल्टन मायो आइडिया, एल्टन मायो का आइडिया हो गया. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लोग पीएमटी थिंकर के आइडिया को भी, है ना, रिलेट करते हैं. तो बिहेवियरल चेंज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग हो गया, कैसे होना चाहिए, जॉब ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड मास्टर्स.
Then managerial performance, new public management, what are the reforms? Okay, how the lateral entry is going to impact the working of government of India. परफॉर्मेंस अप्रेजल रिफॉर्म से क्या प्रॉब्लम हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन से क्या इशू आ रहे हैं, आर्म्स लेंथ क्या है. तो दोज आर द एस्पेक्ट दैट विल बी डिस्कसिंग हियर. तो मैनेजरियल हो गया. एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल पेपर हैज बीन मेड नाउ. Then personal administration, basically we'll focus on major fact, what are the bureaucratic, behavioral and managerial, and these are the dimensions that we are going to major factor that determine the efficiency of effectiveness of personal administration. How the development of individual people in the organization. Simple, एक बहुत ही simple तरीके से इसको समझा जा सकता है. what are all the people who are working in any organization, for them every whatever the arrangement are made, everything will be covered under पर्सनल मैनेजमेंट. ठीक है. इट विल डील विद द क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, सर्विस कंडीशन, जो भी सिलेबस है ना, वो पूरा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है. देन व्हाट इज इट इज एसेंशियल, बिकॉज वी इट इज इंपॉर्टेंट, राइट पर्सन शुड बी प्लेस्ड एट द right position so that he is able to use his talent, skill, knowledge to bring the impactful change, bring transformation in the society. And it will deal with the internal dynamics of the organization. Ultimately, whatever organizational theory that we have seen, how the things are well organized in the organization, that will impact the efficiency and productivity. So internal dynamics, everything will be dealt by the personal administration topic. तो विल्सन से लेकर साइमन तक अल्टीमेटली क्या ऑब्जेक्टिव था, वही एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, टेलर राइट पर्सन एट राइट पोजीशन. वेबर का जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा, वेबेरियन कैरेक्टरिस्टिक, कि हाउ टू अचीव द एफिशिएंसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज और एक्ट एज पर द ऑफिशियल ऑर्डर्स. तो वेबर का आइडिया. ह्यूमन रिलेशन है ना, दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. एंड देन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, सोशल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सोशल सिस्टम, एमपी फोले या एल्टन माय का आइडिया. देन वी हैव द Chester Bernard, very elaborate, and he brought the elaborative content on the contribution satisfaction theory. How people are motivated to join the organization, to what time he will be in the organization, what is the zone of acceptance, zone of indifference. So again, why people are joining any organization, will they sustain in the organization or not, that is determined by the multiple factors. And then he also talked about various type of inducement that you can give to the people working in the organization, है ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर वाला पार्ट भी है. तो वो सब भी कहीं ना कहीं पर्सनल से लिंक है. बिहेवियर क्या है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कैसा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ना. तो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इज ए ब्रॉडर टर्म व्हिच कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स, है ना. ह्यूमन बिहेवियर, मैनेजरियल प्रैक्टिस और एथिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी. तो इंटरडिसिप्लिनरी होगा क्योंकि सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी यूज्ड. सो वी शुड हैव द how the holistic competence can be developed. You are joining the civil services, how your holistic competence can be developed. ठीक. तो then we are seeing here classification, है ना. पहला क्या होगा, कोई भी जॉब है तो उसको क्लासिफाई करोगे, ग्रुप करोगे, है ना. तो क्लासिफिकेशन पोजीशन हो सकता है, रैंक क्लासिफिकेशन हो सकता है, दोनों का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. यानी पहला जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला एस्पेक्ट शुरू होता है, दैट विल बिगिन फ्रॉम द क्लासिफिकेशन. ठीक है. फिर सेकेंड, शुड इंडिया चेंज फ्रॉम, अभी इंडिया में क्या है, रैंक क्लासिफिकेशन है, शुड वी चेंज टू पोजीशन क्लासिफिकेशन. ओके, दैट इज द मेन आइडिया. और व्हाट आर द एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैन इट बी अप्लाइड इन इंडिया, है ना. यूएस के अंदर यहाँ क्या है और इंडिया और यूके में रैंक क्लासिफिकेशन क्यों है, व्हाई वी हैव अडॉप्टेड दिस. देन we also have the structural classification like the all India service है, state service है, local service है. तो what are the key features, है ना, कैसे related है, कैसे एक दूसरे को complement कर रहा है. ठीक. तो those are the basically classification is the first step, foundation of personal administration, because every other process will depend on the classification. because जैसे मान लो रैंक वाला और पोजीशन है, तो उसको हम लोग जब देखेंगे तो किस प्रकार क्लासिफिकेशन becomes very many other aspects are determined based on the classification. ठीक. तो क्लासिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें क्या होगा, पोजीशन का क्लासिफिकेशन, हर पोजीशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, डिफाइंड होगा. व्हाट आर द स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ इंडिविजुअल शुड बी रिक्रूटेड, है ना. हाउ द व्हाट आर द परफॉर्मेंस अप्रेजल स्ट्रेटजी, हाउ दे शुड बी अवार्डेड और इंसेंटिवाइज्ड बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन. ठीक है, ऑफ द पोजीशन. लेकिन जब जो जॉब या रैंक क्लासिफिकेशन होता है, जैसे आईएएस बन गया, आईएएस जो भी कैडर है ना, बेस्ड ऑन जॉब स्टेटस. तो वहां पे क्या है, दोनों का है ना मेजर क्लासिफिकेशन दो ही होता है, एक पोजीशन और दूसरा रैंक क्लासिफिकेशन. पोजीशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, क्या क्या स्किल्स रिक्वायर है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्स, व्हाट आर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टास्क, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कैन बी गिवन. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर,
है ना, हर पोजीशन को हमने क्या किया, उसके स्किल्स और टैलेंट को रिक्वायर्ड क्या है, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो पूरे हायरार्की हम लोग क्या हर पोजीशन को डिफाइन किया जा रहा है। ओके, दिस इज द पोजीशन क्लासिफिकेशन एंड इट इज जस्ट लाइक प्रोग्राम स्टाफिंग, है ना, हर प्रोग्राम को 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर दिए, अब उसमें लोगों को फिट करना है बेस्ड ऑन ईच पोजीशन ईच क्लासिफाई। ठीक, तो एडवांटेज क्या होगा कि राइट पर्सन एट राइट पोजीशन होगा, हमको पता है किस पर्सन किस पोजीशन पे कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है एंड व्हिच पर्सन हैव द दोज स्किल्स। Okay, and they otherwise people working at the same position will get the same salary, that is also equal pay for equal work। expertise भी आता है इससे, the what kind of skills are required, है ना, क्या skills required है क्या नहीं है, तो again it brings expertise and specialization and whatever suppose जैसे पीटर प्रिंसिपल वाला था कि प्रमोशन हो रहा है, यू आर प्रोमोटेड टू द यू बिकम इनकॉम्पिटेंट, है ना, जैसे मान लो यू आर ज्वाइनिंग एज ए डीएम, है ना, you are very good at field level and you will be promoted to higher level, and but you reach to a position where you are not performing well, and after that your promotion will be stopped, है ना, you'll be one of his that means after that position improvement or promotion will not be done, that is the Pareto principles idea। So and then complacency, if you have the proper classification of all the position, all the skills which are required, so what will happen, it will eliminate the complacency and objectivity भी increase हो जाएगा, क्योंकि पूरा पर्सनल प्रोसेस में हम लोग क्या देख रहे हैं, you can easily identify the skills, you can easily identify the skills, whether the individual working in that position have that skill or not, whether they are performing based on those requirement or not, whether we have the right person at right position or not, है ना। तो what will happen, it also facilitate lateral entry because things are very much defined, positions are clearly identified, and you can easily make the recruitment at different levels। Okay, that is very much possible, that's why in USA they are following this position classification। ठीक है, अब इसमें डिसएडवांटेज क्या होगा कि अब देखो मोस्ट ऑफ द जहाँ पे इनस्टेबिलिटी है, कंट्री लाइक इंडिया हैज लॉट ऑफ इनस्टेबिलिटी, लॉट ऑफ डायनेमिज्म, चेंजेस आर टेकिंग प्लेस, but country like USA have attained a relative stage of stability, so in those country more suitable for those country which have achieved relative stability, and country like India, क्योंकि things cannot be clearly defined, you as a DM, your work cannot be defined clearly, you will be responsible for each and everything happening in the district, your positions cannot be completely or role responsibility cannot be completely defined because things are very complex, very dynamic, every district do not have the same problem, people living in that district will have different requirement, different needs, so suppose you are working in a particular district, the things are different, in other district things are different, so will it be possible to define each and everything, all the positions can be clearly defined, is it not, that is not possible, things are very changing, very transformative, so it's become very difficult if you adopt position classification। Then it also pose coordination problem because too much specialization, you are doing too much specialization, है ना, हर डिपार्टमेंट मान लो अपना अपना यूनिट का स्पेशलाइजेशन कर दिया, तो आपस में कोऑर्डिनेशन का भी प्रॉब्लम होगा, तो वी नीड टू हैव द स्पेशली इन अ डिफरेक्टेड सोसाइटी दे कैन हैव द coordination because they have proper integration, like in country like India where it is a prismatic society, what will happen, we have already seen the prismatic society faces the problem of lack of coordination, there is lack of synchronization, there is overlapping jurisdiction, everyone is responsible in a state like Delhi, है ना, हमने क्या देखा, सबको रिस्पांसिबल है लेकिन नो वन इज अकाउंटेबल फॉर पोल्यूशन और फॉर वाटर पोल्यूशन और यमुना पोल्यूशन, तो अगेन देयर इज लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम इन द पोजीशन क्लासिफिकेशन, बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर देंगे तो क्या होगा, सिलोज में काम होने लगेगा, बट आवर सोसाइटी इज ए प्रिज्मेटिक सोसाइटी दैट मे नॉट बी feasible, and skills also skills gets outdated, for example which is very developing or transforming at a rapid pace, what will happen, after coming of ICT things have changed drastically, so now skills which are required, you cannot define the skills required for each position, it is very dynamic and it is very changing। Okay, and also position classification, for example if you bring the rank classification in a if you have position classification, so loyalty to the civil loyalty loyalty to the service or government will be less in a case of lateral entry, but if you have the rank classification you will be appointed for entire life, association lifetime hoga, and then so you will be more loyal to government of India, that is also things। Okay, so institutional, that means you are promoting, if you are have the position classification you are promoting professionalism, and that is very good thing,
but institutional memories will not be created, because people will come and go away for a specific period of time. Things are separated, things are specialized, so it is very difficult to coordinate with each other, and institutional memory may not be created. But same individual is promoted from one position to a higher position, है ना? तो क्या होगा, एक आईएएस मान लो प्रमोट हो के सेक्रेटरीट तक गया, तो he has the institutional memory of working at the field, then working at the top level. So policy implementation का भी experience है, policy making का भी experience है. If you have the position classification, what will happen? Someone is involved in policy implementation, and he may not get chance in the policy making process. Technical expert or academicians, researchers, analytics engineers, so data analytics, so they will be involved in the policy making. So again, things may get disconnected. The institutional memory may not be created if you are promoting position classification. Okay, अब देखते हैं rank classification क्या है. तो especially country like India, we have the rank based classification. For example, IS, IPS, everything is decided based on the rank. Once you become IS, whatever district you are posted, and suppose you are posted in a Naxal district or you are posted in a urban city, so things are not in that means your positions doesn't determine changes the nature of your post, promotion, salary or other thing. Though some incentive could be given. For example, if you are in the urban Naxal affected area, some incentive can be given additionally, but there is not much change in the service condition or the pay, promotion or posting, whatever you are getting as a IS. ठीक है? So those who qualify civil services, they will get top rank. For example, all the services that we are seeing. So they basically, for example, IPS is considered policing के लिए है, ठीक? So he will be what basically in the position classification, what will happen? So policing standards will have recruitment will be specialized. For example, you are applying for the police service, so your recruitment will be based on law, IPC, CRPC का पता होना चाहिए. But in a country like India, we have general studies, common, optional, and nothing specialization. But you are recruiting officer for different, post, different positions. Okay, so that means position classification, you need to match the standard with the policing services. Only those who qualify for those services, those matches those standard, they will be recruited in the police officers. Specialized exams are conducted. But in a country like India, things are not clearly defined. Every position cannot be, क्योंकि क्या हो रहा है, पोजीशन भी बदल रहा है, सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, स्किल्स भी चेंज हो रहा है, तो डायनेमिक सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी भी है. तो इसलिए हम लोग क्या है ना, रैंक क्लासिफिकेशन, इससे लॉयलिटी प्रमोट हो रहा है, कोऑर्डिनेशन प्रमोट हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट हो रहा है. तो एडवांटेज क्या देख रहे हैं, लॉयलिटी प्रमोट हो रहा है ना, क्योंकि सोसाइटी जो ट्रांजिशन में है, ट्रांसफॉर्मेटिव यानी डेवलपिंग सोसाइटी, वहां पे रैंक क्लासिफिकेशन एडवांटेजेस होता है. इससे क्या आ रहा है, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर आ रहा है, लॉयलिटी बढ़ रहा है, इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है. फॉर एग्जांपल यू एज आईएएस, तो आईएएस ऑफिसर इज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सो इट इज इजी टू कोऑर्डिनेट. ओके, देन मोबिलिटी भी है ना, पोजीशन ट्रांसफर ये सब आसान होता है, पता है कि आईएएस को क्या क्या पोस्ट पोजीशन देना है, तो यू कैन इजीली है ना प्रमोट और ट्रांसफर समवन. डिसएडवांटेज वही है, राइट पर्सन एट राइट पोजीशन. सपोज ये है ना, वन इज आईएएस एंड बट ही इज वेरी इनएफिशिएंट, अदर आईएएस है ना, आईपीएस में भी मोर हैविंग द मोर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी. तो यू इट इज नॉट वंस यू आर आईएएस यू विल ओनली ऑक्यूपाई दैट पोजीशन. आईपीएस कैन नॉट बी मेड द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो राइट पर्सन एट राइट पोजीशन नहीं प्रमोट करता है. लैक ऑफ इक्वल पे, यानी देयर इज सम, इफ यू आर मेट्रो इन द मेट्रो सिटीज और इफ यू आर इन द नक्सल अफेक्टेड एरिया, so there is there is not lack of equal pay for equal work. You are doing day and night, है ना. कुछ लोग 10 से 5-6 बजे तक काम करते हैं, कुछ लोग है ना 12 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं. तो there is lack of equal pay. प्रॉब्लम एक्सपर्टीज, स्किल्स एंड नॉलेज का भी दिक्कत होगा, क्योंकि थिंग्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, स्किल्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, एंड इट कैन also lead to पीटर जो वेवर ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम है ना, पीटर प्रिंस हो या कॉम्प्लिसेंसी हो गई. और इनोवेशंस है ना, क्योंकि things are not clearly defined, so it is not, specialization is not done much, है ना, division of work, specialization ज्यादा नहीं होता है रैंक क्लासिफिकेशन में. तो what will happen, innovation and change is less possible, and they will also lack professionalism. ठीक, and then there's lot of subjectivity is there, lack of objectivity in the rank classification. So what we are seeing, society need change, transformation की जरूरत है. लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में हम लोग क्या देख रहे हैं, कंपटीशन, एक्सपर्टीज, नॉलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया. इसलिए रैंक क्लासिफिकेशन क्या हो रहा है, दे आर गेटिंग लेस, दे आर गेटिंग आउटडेटेड.
That's why most of the reforms that we are seeing, normally it is suggested positions हम लोग कहाँ जाना चाहिए, रैंक क्लासिफिकेशन की ओर जाना चाहिए. दैट इज द इम्पोर्टेंट सजेशंस दैट इज बिंग. तो इसलिए हम लोग ना मिक्स टाइप का कैसे आ सकता है. रैंक क्लासिफिकेशन में कहते वंस यू आर इन द आईएएस यू विल बी गेटिंग द सेम सैलरी पैकेज प्रिविलेज. पोजीशन वाला में क्या होता है, यूएस के अंदर जो लेटरल एंट्री टाइप हो गया, एक्सपर्ट स्पेशलाइजेशन हो गया. तो देन वी हैव द फंक्शनल क्लासिफिकेशन. दिस इज मिडिल पाथ. बुद्धा हमेशा रेस्क्यू के लिए आता है. अब इसमें क्या है, जैसे ARC1 और ARC2 रिकमेंड करता है डोमेन एक्सपर्टीज का, है ना. सपोज ऑल द डीएम, है ना, फॉर एग्जांपल ऑल द आईएएस ऑफिसर्स, दे हैव वर्क इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, है ना. एंड बट वंस दे आर रिक्रूटेड टू द सेक्रेटरीट लेवल, so they will be given training in specialized departments or ministries. मान लो एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है या फिर फॉरेन अफेयर्स का है, तो नाउ थिंग्स विल बी सेग्रीगेटेड. You develop some domain expertise, and based on that exam or based on your interest you will be qualified in that particular department. तो डोमेन एक्सपर्टीज में 8-10 है ना, को डोमेन एक्सपर्टीज का बात किया. तो दैट मींस यू आल्सो हैव द रैंक क्लासिफिकेशन, बट एट द सेम टाइम यू आर आल्सो ट्राइंग टू ब्रिंग द एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन इन पार्टिकुलर डोमेन, है ना. नहीं तो ऐसा है कि जैसे आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कल है ना फॉरेन मिनिस्ट्री में, कल और उसके बाद होम मिनिस्ट्री में, तो यू आर नथिंग इज same IAS officer working in different ministries and departments without having any domain expertise. So that is also too generalistic approach, है ना. तो इसलिए हम बीच का क्या रास्ता सजेस्ट किया गया, डोमेन एक्सपर्टीज का. लिमिटेड लेटरल एंट्री, दैट मींस the things which are very dynamic, है ना, which especially after globalization, what we are seeing, some sectors which are market based or which require a lot of innovation, technology upgradation is there. So on those sector, things are getting outdated, lot of new skills are required, lot of new analytics are required. There government can go for lateral entry. What is the rationality of lateral entry? That you can that you can see. Then specialized education, many of you, you will be going for higher education. Once you get into the service, you will can go for higher research, higher study in the service also. Government will facilitate that. Okay. So, obviously in a country like India, there are concerns with regard to rank classification. They are less suitable in the contemporary time. That's most of the reforms that we are seeing, or the committee, or even if you become the member of a particular committee, what you will suggest, you will also suggest position based system आना चाहिए, है ना. There should be greater move toward from rank to position classification, है ना. उसकी ओर हमें move करना है. That is most of the committee or commission have recommended that. स्पेशली इन पोस्ट लाइक ज्वाइंट से के ऊपर में क्या होता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है ना, थिंग्स आर डिवाइडेड, डिवीजन ऑफ वर्क है, स्पेशलाइजेशन है. बट द ब्यूरोक्रेट्स और रिक्रूट, दो आईएएस ऑफिसर्स जनरलिस्ट आर recruited in all the top level position in different ministries and expert, and departments. They lack some kind of expertise. That's why government of India is looking for lateral entrance from the joint secretary or above level. What will happen? They will come up with the new ideas in the market, for the example in technology domain, in the market domain, in the public sector management domain. So there are a lot of skills, lot of new things are happening at a very faster pace. Lot of transformation, radical disruptions are happening. So government also needs some mind, some brain, which are very much updated with the contemporary changes, new transformation, new age skills are needed in the government of India. Otherwise what is happening, government is India is relying on the same set of officers who have been promoted from the field level. And now they, for example, there is a lot of dynamism, especially after globalization, है ना. थिंग्स आर चेंजिंग एट ए रैपिड प्लेस. आईसीटी का रिवोल्यूशन आ गया, बहुत सारे चेंज आ गया, मार्केट में इतने सारे रिफॉर्म्स आ गए, एमएनसीज का राइज हो गया, तो लॉट ऑफ ग्लोबल एग्रीमेंट्स आर बीइंग साइंड. सो यू नीड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, लॉट ऑफ टैलेंट, and talented specialized people are needed to think as a head brain of the government of India. And but if the bureaucrats, those who are being promoted, they may lack some kind of expertise. That's why what we are needed is that that's why even lateral entry is justified. But there are also suggestions that all these bureaucrats, they have already have the vast ground experience, they can also be given domain expertise, you can choose from particular domain that you want to get associated with them. For example, Ministry of Rural Development, Ministry of Agriculture, Ministry of Finance Ministry, or so then you will be getting expertise or a lot of training in that. You will be conducted, certain exams will be conducted, you can choose that particular domain, and for rest of the service of your life, you can be in that particular department. What will happen, it fulfills the idea of expertise and specialization at the top level. Okay, so that also promote division of work, that promotes specialization. See how the middle path, है ना.
तो Surendranath committee है ना, they also apart from ARC 1 and 2 they have also recommended that this ARC 1 ने 8 डोमेन बोला, अब क्योंकि है ना things have changed now, more and more specialization is taking place, है ना। जैसे वही तो टेलर का भी आइडिया क्या था कि पहले क्या कोई भी काम होता है ना, एक दो आध बंदे सब कर रहे हैं, नाउ वी हैव लॉट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, थिंग्स हैज टू बी very much specialized, professionalism is required, new skills are required, new technology is required, you have to be competent, you have to synergize with the global policies. That's why things are getting specialized. That's why government is promoting lateral entry, or committees have recommended all the generalists who are being promoted to the ministries or department, they should be given domain expertise, ठीक है। तो दे आर आल्सो लाइक अल्टरनेटिव्स, अदर अल्टरनेटिव्स वही है, लेटर एंट्री है, promotion based on specialized academic knowledge. For example, suppose you need to pursue certain career objectives, or you have to pursue some academics, get degree, then only you can be made the manager in the particular finance ministry. Very technical jobs are required. Okay, so and even now what is happening, government has also come up with a mission Karmyogi, that means training at the workplace, you are working as well as you are getting the training or skills which are required for a particular job. Again, you see the objectives of position classification, how they are rank classification, how they are trying to reach to the position classification strategy. That means jutne rank classification ke log hai now, in terms of training also, we are seeing how the things have changed. Now it is very dynamic process, everywhere you'll have to undergo some kind of training program, or every interval of some years, है ना। इससे क्या होगा, जो पोजीशंस के स्किल्स रिक्वायर्ड है, whatever new age skills are required, that will be provided by the mission Karmyogi. So that there is somewhere we are trying to bridge the gap between the rank classification and position classification. Okay, so far, but what is happening, all these reforms are piecemeal. That means you are taking reforms in a silos, not comprehensive reforms are being taken. So what is the objective is to move from rank to position classification. Okay, that is the idea. And those for a country like USA, they have the position classification. So some you can always have the mix of two. Okay, that is the ideal. In a country like India, we can have the mix of two, lateral entry ho gaya, mission Karmyogi ho gaya, then domain expertise ho gaya. Those are the way forward or strategy that we have to write in the conclusion part, है ना। तो दोनों का advantage disadvantage दिखा के, then how they are we need to move from rank to position, but there is a middle path, there is a way forward, practical way of doing things that that we have seen here. These are the practical suggestions, alternatives where we can achieve the objectives of position classification by remaining being the following the policy of rank classification. That is the main idea. ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन इंडिया में क्या है। इंडिया में हम तो देखे रैंक क्लासिफिकेशन इन ए थ्योरेटिकल टर्म, नाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज एट डिफरेंट लेवल्स। तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत का जो टॉपिक है ना, तो दैट यू शुड अगेन यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर ओनली, एंड और यू रीड इन व्हाटएवर पॉलिटी सेक्शंस यू आर कवरिंग इन फ्रॉम लक्ष्मीकांत और अदर बुक। तो यू हैव टू ब्रिंग ऑल दोस कांसेप्ट हियर एट वन प्लेस, है ना, एक जगह सब लिख दो, तो दैट विल हैपन, दैट विल बी बेटर। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, व्हाट इज द यूनिकनेस इन इंडियन, इंडिया में क्या है, इसको ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में ही, आपको सिविल सर्विसेज का मेंशन कर दिया, ऑल इंडिया सर्विस का मेंशन कर दिया। So that means the constitutional recognition is given to the all India servant. So that again very that shows the significance of these officers. For example, in many of country they are considered as autonomous of, even they are considered as a fourth organ of the state, the bureaucrats, the civil servants, administrator, because of the idea of dichotomy. So some country they have different. India में क्या है, constitutional status या recognition दे दिए। तो व्हाट आर द आर्टिकल 3, 9, 10, है ना, तीनों में क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशंस है। मेनी टाइम्स यू विल बी आस्क कि हाउ इट इज अ ब्रिटिश लेगेसी, हाउ मेनी ऑफ द ऑफिसर्स दे आर गेटिंग टू मच दे आर गेटिंग कॉम्प्लेसेंट बिकॉज ऑफ टू मच सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और सिक्योरिटी ऑफ जॉब, है ना। एक बार आईएएस बन के कोई हटा नहीं सकता है, ओनली द ऑफिसर हु अपॉइंटेड यू, president will appoint and only president can remove, no other government employee, minister or chief minister can remove you from the service. तो lot of security of job is there. तो again there is a issue, क्या होता है कि उसके कई सारे करप्ट ऑफिसर है, तो it becomes very difficult to remove them, ठीक। तो article 309 it deals with the regulation of condition of civil services. On this basis only the civil services conduct rules are framed. What should be the conduct, how impartiality, neutrality should be followed. Then we have the article 310
310 में क्या है, जब प्रेसिडेंट का प्लेजर, यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हाउ दे कैन ओनली रिमूव यू, no other minister or government can remove you from the service. And then article 311, what does it talk? He cannot be removed from the authority who is subordinate to the appointing authority. For example, president has appointed. अब ये ऐसा क्यों हुआ था? ब्रिटिश लेगेसी है, क्योंकि ब्रिटेन में क्या था कि जो टॉप लेवल ऑफ गवर्नर या जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या जो गवर्नर जनरल होते थे, दे वर ओनली रिक्रूटेड हाई लेवल ऑफिसर्स, दे वांटेड टू कीप दिस प्रिविलेज विद देम, है ना, सो दैट अगर मिनिस्टर कोई बन गया इंडियन, they cannot remove the officer. That's why they have ensured that all the officer, if they are being removed, that will be done only by the governor or governor general, lieutenant governor. तो वो लेगेसी अभी तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. इट आल्सो गिव्स लॉट ऑफ सिक्योरिटी टू द जॉब, सिक्योरिटी टू द ऑफिसर. इसका यूज और मिसयूज दोनों है ना. ऑनेस्ट ऑफिसर के लिए अच्छा है कि दे कैन इन इम्पार्शियल तरीके से काम कर सकता है. बट करप्ट एंड ऑफिसर्स और जो पॉलिटिकली बायस्ड होता है, तो दे आल्सो रिमेन इन द सर्विस बाय अपीजिंग द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर. तो वो भी एक प्रॉब्लम है. तो दैट्स व्हाई आर्टिकल, ये जो आर्टिकल 311 है ना, 311, उसको हटाने का बात ERC2 रिकमेंड करता है ना. इट इज काइंड ऑफ तो व्हाई दिस आर्टिकल वाज कंटिन्यूड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिकॉज विड्रो विल्सन टॉक्ड अबाउट डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ, है ना. तो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डीपोलिटिसाइजेशन होना चाहिए, इंसुलेट करो. दे शुड हैव द autonomy, freedom, they should have the confidence in them. Even if they are taking action independently, neutrally, they will not be removed. That's why they needed job security. And there, article 311 prevented the political interference. Otherwise what will happen? Every state government, CM क्या, कई सारे ऑफिसर को based on political aligning they will remove. It will lead to lot of instability, है ना. तो इसलिए आर्टिकल 301 का जो रेशनैलिटी है, that's why you need to justify both aspects. So why article 311 was needed after independence? In a country like India, there is a lot of, especially in a prismatic society like India, where there is a lot of politicization of administration and a lot of political interference. So bureaucrats, they need to provide some kind of job security, some kind of career security. तो autonomy देना जरूरत है, independence देना जरूरत है. So that's why it promotes balanced polity. Officers cannot be removed on the whims and fancy of the politicians, है ना. जब मन किया हटा दिया, ऐसा नहीं चलेगा. तो that's why this was but it also promote lack of accountability in the contemporary time, है ना. officers are insure कि भाई हमें तो कोई हटाएगा नहीं, जो करना है कर लो, है ना. transfer me anywhere, I will not be efficient. तो even if you are inefficient, है ना, in the particular state, but if you are aligned with the political party at the central level, what will happen? State government चाह के भी तुम आपको रिमूव नहीं कर सकता है. You will remain in the service. Maximum what they can do, they can transfer you to some inefficient position, or less significant departments. जैसे मान लो अशोक खेमका का एग्जांपल है, he is promoted to less significant department because of too much radical approach to what administrative work. He will no compromise with honesty. So those kind of officers sometimes face problem, but they are the pillars, flag bearer of bureaucracy, the new Weberian bureaucracy, neutrality, impartiality, honesty, integrity. They are also pillar of. It also promotes civil services activism. You can easily raise the objections if things are not going as per the constitutional goals, or there is misuse of any law. You can easily raise the voice. You can also become whistleblower. That's why this article 311 becomes again very important. तो प्रोज एंड कॉन्स जा रहे हैं. तो मतलब एडवांटेज क्या है? अगर रिमूव कर दें तो क्या एडवांटेज है, रहने क्या है? अगर रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? किसी भी ऑफिसर को हटाना आसान होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी. ग्लोबलाइजेशन के रहे व्हाट वी वांट एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट, नॉट द डेड वुड्स, है ना. जो तो दैट्स व्हाई वी आर फोकसिंग ऑन लेटरल एंट्री, परफॉर्मेंस बेस्ड सिविल सर्विसेज. सो अगेन इट विल व्हाट विल हैपन, द नाउ things will become more flexible. It will promote efficiency and productivity, है ना. अकाउंटेबिलिटी भी प्रमोट करेगा. एवरी ऑफिसर विल बी फियरफुल, दे कैन बी एलिमिनेटेड, डेड वुड्स विल बी, है ना. वी विल एलिमिनेट द डेड वुड कांसेप्ट. जो ऑफिसर काम नहीं करो उसको हटाओ, है ना. लेकिन डिसएडवांटेज अगर हटा दिए, है ना, 311 हटा दिए, तो क्या होगा कि भाई इससे पॉलिटिसाइजेशन पॉसिबल है. डॉक्ट्रिन ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी. इंदिरा गांधी के टाइम क्या था? she asked all the officers should believe in the ideology of the political party in power. They should be committed to the policies and program. Initially the idea was that they should be committed to the policies and program of political party in power, that means government. But slowly it converted into political party कि ये है ना पार्टी के प्रति लॉयल होना चाहिए.
committed to the party's ideology. So that was leading to a lot of politicization. For the first time, the committed bureaucracy, was phenomena was seen during the Indira Gandhi time, and again it is being continued in different phases. ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमेशा डर रहेगा, प्रेसिडेंट अगर पार्टी का है तो ही कैन रिकमेंड द रिमूवल एंड देन ऑफिसर विल बी रिमूव. तो अनसर्टेनिटी विल आल्सो बी देयर, पोस्टिंग ट्रांसफर इसको लेके. तो व्हाट इज हैपनिंग, बोथ, इट ऑब्वियसली एनीथिंग विल हैव प्रोज एंड कॉन्स दैट यू कैन रिमेंबर. तो उसके बाद आप, व्हाट इज योर ओपिनियन. तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 311 रिप्रेजेंट ब्रिटिश लेगेसी. व्हाई ब्रिटिश लेगेसी? ऑल द लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर, व्हाट दे वर हैविंग, they wanted to have the final say in terms of removing any officer. And suppose most of the officers, they were loyal to the Britishers, and but for example state level या ministerial level पे क्या है, Indians were appointed, है ना. तो what they wanted to prevent the Indians having that power to remove a officer. That's why they continued with this policy, है ना. ये legacy ऐसा था, लेकिन उसको बाद में हमने continue किया just to maintain autonomy, है ना, impartiality, and to make the bureaucrats independent of political interference. That's why we continued it. तो इंडिया में डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ गया, तो वी वांटेड टू हैव द लीगल प्रोटेक्शन, एब्सोल्यूट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन शुड बी गिवन टू द ब्यूरोक्रेट, सो दैट they do not become politicized, है ना. तो but nowadays what is happening, now we are focusing more on the accountability aspect instead of stability, है ना, instead of stability of tenure or officers. We are focusing on the responsible or accountability to the people, है ना. That's why there is a recommendation that यहाँ पे क्या होगा, अगर हम ज्यादा जॉब सिक्योरिटी दे रहे हैं, है ना, ऑफिसर क्या होगा, काम नहीं कर रहा है, सीएम की बात नहीं मान रहा है ना, सीएम मैक्सिमम क्या कर रहा है, उसको सस्पेंड कर रहा है या ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर सकता है. पॉपुलरली इलेक्टेड पीपुल हैव गिवन मैंडेट टू द चीफ मिनिस्टर कि ऑल द ऑफिसर शुड वर्क, क्योंकि अल्टीमेटली दे ही इज बीइंग पेड बाय द टैक्सेस दैट इज बीइंग पेड बाय द पीपल इन दैट एरिया, है ना. तो वो पैसा ले रहा है, लेकिन ही इज नॉट वर्किंग, उसको सस्पेंड करो, ट्रांसफर करो, बट ही विल नॉट बी रिमूव अंटिल अनलेस प्रेसिडेंट डिसाइड. तो यहाँ पे क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी टू द सिटीजन इज डाइल्यूटेड, रिड्यूस्ड, है ना. तो इसलिए क्या रिकमेंडेशन है, इसको एबॉलिश करो. okay, but and then at the same time they have recommended the honest civil servant should be provided some kind of security or protection against the intervention or interference by the political party. ठीक है, ये आर्टिकल 311 का डिबेट. then we have other article 312 all India service, very important. And why, what are the special power privileges that are given to the all India servant? All of you are also preparing to become all India servant. What are the special role power enjoyed by the all India service? Characteristic kya hai? Why do we need the all India service, especially in a country where lot of fishery tendencies are there, lot of successionist movements are going on? So do we need the all India services? Should we continue it? Why India adopted all India service? What is the rationality behind all India service? Whether still it is important, or what are the why it was considered as a steel frame? Should we create more all India services, है ना, चाहे हेल्थ में, एजुकेशन में, फॉरेस्ट में तो ऑलरेडी है ना. क्या क्या न्यू डेवलपमेंट पॉलिसी में क्या चेंज हुआ, और प्रपोज चेंजेस क्या है कैडर पॉलिसी में, तो ऑल दोज एस्पेक्ट विल सी. ठीक है, तो ऑल इंडिया सर्विस व्हाट रिप्रेजेंट, है ना, वी आर हैविंग द ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव. जैसे ऑल इंडिया सर्वेंट क्या होगा, एक तो ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव आ रहा है ना. तो हम लोग क्या, यूनियन और स्टेट, यानी सेम ऑफिसर विल बी डेपुटेड टू द सेंटर आल्सो. तो यू आर हैविंग द एकदम सिंक्रोनाइज्ड व्यू ऑफ द स्टेट एंड यूनियन एज इंडिया एज ए होल. तो इट विल आल्सो प्रमोट सेंट्रल कंसंट्रेशन, कॉपरेशन भी हो रहा है ना. तो कॉपरेशन बढ़िया होगा यूनियन स्टेट, क्योंकि ऑफिसर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट कमिंग टू द यूनियन सेक्रेटरिएट, so he knows about the working of state government, the problem they are facing, and what are the administrative mechanism. So it is very easy for them to cooperate with the state government also, and it will promote administrative leadership, because you as a all India servant can develop the vision of new India, or you can also create lot of initiatives which can also mobilize the masses for radical transformation. At the same time you are also maintaining the stability, unity and integrity again, especially after independence. India since independence हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में, कि आजादी के टाइम कितने सारे फ्रेगमेंटेशन था, कितने सारे सक्सेसनेस मूवमेंट थे. अभी भी कई सारे नॉर्थ ईस्ट में और JNK जैसे स्टेट में वी आर स्टिल फेसिंग दोज प्रॉब्लम. तो द लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम. And then all India service, they have the relatively autonomy is there, independence is there, and most of you are recruited at the all India level. Most of them are meritorious, they have high caliber, they have
having lot of potential, entrepreneur quality भी होता है. So you are having broader horizon. That's why all India servants become very crucial for the performance or improvement, organizational efficiency. Need क्यों है कि देखो इंटीग्रेशन में आजादी के टाइम क्या देखे, प्रिंसली स्टेट था, इतने सारे लोगों को एक साथ लाना आसान नहीं था. तो इट वाज रिमार्क, इफ वी वांट इंडिया टू रिमेन यूनाइटेड, वी मस्ट हैव ऑल इंडिया सर्वेंट. है ना, पटेल का स्टेटमेंट, सरदार पटेल. तो अदरवाइज ऑल इंडिया सर्वेंट नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना रीजनलिज्म, लोकलिज्म, फिर नैरो व्यू ऑफ ऑफ इंटरेस्ट, है ना, अपने स्टेट के लोगों का ही सिर्फ सोचना, सेल्फिशनेस, सेल्फ सन ऑफ द सॉइल फैक्टर, ऑल दीज फैक्टर्स विल बी डोमिनेटिंग द. तो वी एज ए इंडिया विल नॉट मे नॉट हैव एग्जिस्टेड. है ना, तो इसलिए ऑल इंडिया सर्वेंट का कंट्रीब्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इज ह्यूज. इवन इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट होम मिनिस्टर. If we want united India, then we must have all India servants. ठीक है, that's why they have put this idea in the constitution itself. Patel was very much vociferously he wanted to have that all India service should be continued. That's why he is considered as a father of all India servant. ठीक, तो यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए तो पटेल का तो रोल है ना. स्टेचू ऑफ यूनिटी हैज बीन क्रिएटेड, है ना, यूनिटी दिवस हम लोग मनाते हैं. तो इवन अदर फैक्टर्स आर, वी नीड टू हैव द डेवलपमेंट प्लानिंग. पहले क्या था, टॉप डाउन सेंट्रलाइज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का आइडिया. देयर आल्सो वी वर ब्यूरोक्रेसी लेड डेवलपमेंटल मॉडल दैट वी हैव फॉलोड. वी वांटेड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, स्टेबिलिटी इन द administrative system. Otherwise lot of fragmentation, lot of instability will be there. What will happen, it will remove the, if there is no stability and order, what will happen, all the investment will go away, है ना. And it is also foundation for the democracy. People should be empowered, their work should be done in a efficient manner. And also all India service, they are also accountable because they are ultimately accountable to the government of India. ठीक है, हम लोग क्या देखें, ट्रांजिशनल नेचर है सोसाइटी का, यूनिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करना, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, स्टेबिलिटी लाना. तो दैट्स व्हाई वी हैव द आईएस एज ए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, है ना, उसको स्टील फ्रेम भी बोलते हैं. स्टील, है ना, वी आर मेंटेनिंग. तो चेंज भी आ रहा है, कंटिन्यूटी, दैट वाज द वेवरियन ब्यूरोक्रेसी आइडिया. चेंज एंड कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड order should be there. So developmental role and regulatory role both have been given to the bureaucrats, the officers, all India servant. अब देखो एक्सपीरियंस है वर्किंग ऑफ ऑल इंडिया से, हाउ दे आर वर्किंग, द वेरियस रूल्स लॉज हैव बीन क्रिएटेड. रिमेंबर सम ऑफ देम, है ना. कैडर एलोकेशन पॉलिसी में क्या चेंज हुआ, उसके बारे में कुछ आइडिया होना चाहिए कि भाई क्या पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द करंट पॉलिसी, व्हाई गवर्नमेंट हैज ब्रॉट न्यू चेंजेस. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि स्टेट, पहले क्या स्टेट वाइज कैडर है ना होता था, अब उसको जोन में बांट दिए. पहले क्या होता था, ज्यादा सारे जो टॉप लेवल है ना रैंकर्स थे एक पार्टिकुलर स्टेट में चूज चला गया. अब क्या होगा, जोन में बांट दिया, तो थिंग्स आर मोर इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इंडिया, है ना. आपको एक एक जोन से एक एक स्टेट को चूज करना है हर साइकिल में. ठीक है, तो दोज आर फॉर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, नथिंग मच, जस्ट ओनली टू मेंटेन ऑल इंडिया नेचर ऑफ ऑल इंडिया सर्वेंस. तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि देयर इज नथिंग ऑल अबाउट इंडिया इन द ऑल इंडिया सर्वेंस, है ना, क्योंकि वो तो जीवन भर कहाँ काम कर रहा है, एक पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, कैडर पार्टिकुलर स्टेट के साथ काम रहा है. तो इज इट appropriate to say that it is all India in nature? Central civil servants are more all India in nature because they work in at least 5 to 6 states, 7 to 8, 10 states, है ना. तो वो क्वेश्चन आता है, वो डिबेट भी देखेंगे अभी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1950 से अलग अलग फेज में अल्टीमेटली वी हैव टू डिवाइड, है ना. दिस इज हाउ यू आंसर इट. अलग अलग फेज में हम मेजर क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके फेज 1 को 90s के पहले, 90s के बाद का फेज बना दिया, और है ना फिर 2014 के बाद क्या फेज है. तो अभी 1950 से 1990 के भी 2 फेज कर दिया. एक तो 70 के पहले क्या था, बैलेंस पॉलिटी था, ब्यूरो ऑफिस, द मिनिस्टर्स वेर आल्सो आइडियलिस्टिक, आइडियोलॉजी बेस्ड था, एंड दे हैड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. तो वी हैड द बैलेंस पॉलिटी. लेकिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कब आ गया, 1970s के बाद, है ना. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आ गया. 1990s के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि देयर वाज डेमोक्रेटाइजेशन, 73rd 74th अमेंडमेंट, है ना, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, एनपीजी रिफॉर्म, गुड गवर्नेंस रिफॉर्म. तो ऑल दीज रिफॉर्म्स हैव रिजल्टेड इनटू पीपल्स पार्टिसिपेशन, मार्केट लेड डेवलपमेंटल मॉडल. सो व्हाट विल हैपन, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, है ना. दैट मींस तो ब्यूरोक्रेसी वाज क्रिटिसाइज्ड ड्यूरिंग 70s 80s में. डॉक्ट्रिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आ गया, नेक्सस करप्शन आ गया, लॉट ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स वाज हैपनिंग, नेक्सस विद एडमिनिस्ट्रेटर, ब्यूरोक्रेट, नेता, बाबू, लाला, ऐसा कॉन्सेप्ट, है ना. तो दोज आर द थ्रेट दैट हैज हैपेंड इन द 70s एंड 80s, है ना. उसके 90s के बाद काफी रिफॉर्म आना
जरूर lot of reforms have been initiated under good governance initiative. ठीक है, तो things were very much politicized, regionalism, communalism, everything, nexus, corruption, everything impacted the working of all India service, है ना. तो काफी क्रिटिसिज्म होने लगा ऑल इंडिया सर्वेंट को, है ना. टीएन सेशन का क्या रिमार्क, इट इज ए स्पाइनलेस ब्यूरोक्रेसी, है ना. तो मतलब कितना दिखा रहा है कि लो लाइट में, है ना. स्टील इज रस्टेड एंड फ्रेम इज लेफ्ट. तो these are only observations to make you understand, feel the gravity of problem, how the all India service was in a danger, in a crisis, how the legitimacy of all India service was questioned, the efficiency and rationality behind the all India servant was questioned. So even Nehru stated once, it was neither all Indian perspective nor service oriented, है ना. जैसे सीएजी विनोद राय क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विदाउट इट्स मेंबर हैविंग द सर्विस ओरिएंटेशन, है ना. सर्विस ओरिएंटेशन है बट यू आर वर्किंग इन ए बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. तो दैट इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू बिहेवियरल एस्पेक्ट. ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव होना जरूरी है, तो दैट वाज लैकिंग, है ना. बोहरा कमिटी व्हाट हाईलाइटेड, नेक्सस करप्शन 93 में हाईलाइट कर दिया. फिर 2014 के बाद अगेन व्हाट वी आर सीइंग, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, रेडिकल चेंजेस आर बीइंग ब्रॉट by the contemporary government, है ना. We are also improve, motivating the bureaucrats for the performance oriented, है ना. We are eliminating the dead woods, those who are not performing they are removed. So there is radical reforms have been initiated. Now we don't have the doctrine of committed bureaucracy. Current government has also made its change in the conduct rule 2014 के बाद. So now we are focusing neutrality, है ना. The unity integrity again becoming very important, and we have to bring the radical transformation, developmental. So again bureaucrats role are being redefined in the current time, है ना. काफी चेंजेस आ गया, देखो करप्शन एक्ट है, अमेंडमेंट हो गया, 360 डिग्री अप्रेजल आ गया. So what is ultimately what will happen, everything are improving the efficiency and productivity of all India service. तो all India service का कुछ जनरल क्रिटिसिज्म, एक तो कॉलोनियल लेगेसी हो गया, है ना. कमांड एंड कंट्रोल वाला टेंडेंसी अभी तक कॉलोनियल लेगेसी कैरी कर रहा है. दे आल्सो हैव द यूनिटरी पॉलिटी, दैट मींस फेडरल पॉलिटिक्स सूटेबल नहीं है. यूनियन गवर्नमेंट हैव ग्रेटर कंट्रोल, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो बात है उसको नहीं मानता है ना. दिल्ली में काफी ज्यादा विजुअल, दिल्ली गवर्नमेंट में जो ऑफिसर्स है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट लिसनिंग टू द मिनिस्टर्स. तो दैट इज प्रॉब्लम. और सम स्टेट्स, वेस्ट बंगाल या कुछ स्टेट्स में प्रॉब्लम फेस हो रहा है, फेडरल पॉलिटी इंपैक्ट हो रहा है. एंड देन स्टेट आल्सो क्रिटिसाइज कि भाई ब्रिटिश लेगेसी है और है ना यूनिटी कैरेक्टरिस्टिक है. इंडिया इज नॉट ए यूनिटी कंट्री, वी आर ए फेडरल कंट्री, है ना. दे डोंट हैव अल्टीमेट कंट्रोल. हु एक्सरसाइज अल्टीमेट कंट्रोल, इट इज द प्रेसिडेंट. And then in matter of conflict also between union and state, what will happen, all India servants will try to align toward union government, है ना. तो state are left with the second rung of officer. For example, all the state civil servants, they are not being promoted to the top level positions, है ना. mostly it is the all India servants they occupy. तो स्टेट का जो सिविल सर्वेंट है, दे डू नॉट गेट प्रमोशनल एवेन्यूज. ठीक है. 1990s के बाद हम लोग एक तो पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट या एनपीजीएल, है ना, डिसेंट्रलाइज, इतने सारे इनिशिएटिव लिए गए. But internal mobility of people have also increased. For example, people are moving from one place to another place. So there is greater level of integration and development, है ना. And we are also seeing the debureaucratization, less role of bureaucracy, limited role of bureaucracy, facilitator and enabler role of bureaucracy. So that's why all India servants again remain relevant, because all India servant itself, the nature, working and qualities of already changed. Significance क्या, need क्या, अभी भी जो कम्युनलिज्म है ना, और सेपरेटिज्म, ये सब तो प्रॉब्लम है ही. स्टिल वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. दैट्स व्हाई थ्रेट ऑफ यूनिटी इंटीग्रिटी इज स्टिल देयर. इंटरनल मैटर, जम्मू कश्मीर, आईसीटी. अब देन अदर प्रॉब्लम इज न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आर टेकिंग प्लेस, है ना. आईसीटी लेड डेवलपमेंट, कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, कई सारे न्यू थ्रेट्स है, न्यू जनरेशन ऑफ थ्रेट्स आर देयर. दैट्स व्हाई वी नीड सम इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव. ठीक है. एंड देन आल्सो ट्रेडिशन, इंडिया इज ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्रिज्मेटिक सोसाइटी. तो हम क्या कर सकते हैं, सिविल सोसाइटी, वी कैन नॉट, स्टेट कैन नॉट कंप्लीटली लीव द एवरीथिंग ऑन द मार्केट और सिविल सोसाइटी. जैसे वेस्टर्न कंट्री में क्या, स्टेट रोल हैज ड्रास्टिकली रिड्यूस, स्टेट आर जस्ट फैसिलिटेटर एंड इनेबलर. लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, स्टेट इज अगेन स्टिल प्लेइंग द वेलफेयर रोल, है ना, डूइंग द लॉट ऑफ एक्टिविटीज, इन्वॉल्व इन मेनी ऑफ द एक्टिविटीज. सिविल सोसाइटी इज नॉट मच डेवलप, है ना. सिविल सोसाइटी ग्रुप हर जगह एक्टिव है नहीं. And market also not complete perfect, यहाँ भी lot of market inefficiency is there. Okay. And then strong leadership qualities also required, because if you are a strong bureaucrat, if you have the all India perspective, you will maintain stability and order, maintain unity and integrity,
And federal polity also, there are a lot of secessionist tendency, lack of coordination. Federal polity also require cooperation and coordination. That's why all India servant officers are required. And all India means all of you are all India talent, and you are equitably distributed across India. Your talents will be used by different regions of the state and of the country. Okay. And also we know India is a prismatic society. We have the subject or parochial political culture, so people are lacking the all India perspective. We need a service where we can eliminate the son of the soil factor, है ना. तो इसलिए हम लोग को ऑल इंडिया सर्वेंट जरूरत है. तो 1970s ऑनवर्ड व्हाट वी आर सीइंग, इंदिरा गांधी टाइम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी आ गया. 90s ऑनवर्ड हम क्या देख रहे हैं, नेक्सस करप्शन बहुत ज्यादा हो गया, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि लॉट ऑफ criticism of all India service is still. That's why criticize then bring the reform. If there is no criticism, no reform will take place, है ना. So there various committees have been initiated. So many of the bureaucrats, individual example चाहे prime minister का excellence award है ना, so that you can look. There are many all India servants who are performing very good, in terms of achieving the objectives of government of India, bringing radical transformation in society. Some example you should have, है ना. Those are things that you can bring out, how it is providing a stability and order, how things have changed. So now we need to, many have propagated that we should have the more all India servant, judicial, education or health department, because quality is not uniform across the country. We need to bring equity in the terms of resource or in terms of opportunity, in terms of a skill or education level. So lack of uniformity is there across even country like India, where there is different nature of governance at different locations. Lack of uniformity there, standardization is lacking, है ना. ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे तो क्वेश्चन आता ही आता है. इतने सारे नए सजेशंस और भी है. तो वही है, अल्टीमेटली वी वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीपीएसपी. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का है, जेंडर गैप बहुत ज्यादा है. तो स्टेट्स आर लैकिंग, दे लैकिंग इन सम एरियाज. तो ऑल स्टेट्स हैव नॉट परफॉर्म वेल. देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी दैट ऑल इंडिया सर्विस कैन ब्रिंग, है ना. तो प्रॉब्लम क्या है फॉर, तो अब जैसे मान लो हेल्थ एजुकेशन, इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट, है ना. लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल मेमोरी इज देयर. पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ में, एजुकेशन में कैसे क्या करना है. तो लैक ऑफ डोमेन स्पेशलाइजेशन इज देयर. एंड देन बोथ बेसिकली पुअरली एडमिनिस्ट्रेटेड, सम स्टेट्स आर poorly administered, some sectors, health and education sector again remains the major problem of India not being developed, है ना. जब तक वो हेल्थ एजुकेशन बढ़िया नहीं होगा, स्कूल नहीं मिलेगा, तो still will not be a developed nation. ठीक. तो that's why many of the state personnel, they are not of the high caliber. Son of the soil factor dominate. Lack of regularity there. Lot of scam is happening at the state level. So that's why many of the sectors, many of the domain require all India servant, है ना. जुडिशियल सर्विस पे तो स्पेशल क्वेश्चन ही आता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ, क्योंकि क्योंकि क्वालिटी ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी पुअर. लॉट ऑफ पेंडेंसी इज देयर, वैकेंसी इज देयर, है ना. पुअर है लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही पुअर है. सन ऑफ द सॉइल फैक्टर आता है ना. मेरिटोरियस फैक्टर इज आल्सो लैकिंग, टैलेंटेड पीपल आर नॉट गोइंग इन द जुडिशियल प्रोसेस. तो मेरिटोरियस फैक्टर इज अगेन इंपॉर्टेंट. So then we also see how basically local level judiciary is highly inefficient. That's why it has been suggested we should go for but current government also stated in parliament that many of the states are not willing to have the all India judicial service. Many of the high courts have opposed. Some are supporter and some are opposed. Why do we need justice and good governance? Very important. डेमोक्रेसी का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के लिए जरूरत है. ग्रोथ, डेवलपमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना. कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट अगेन इंडिया इज वेरी लैकिंग बिकॉज ऑफ पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, है ना. जुडिशियल जजमेंट डिले होता है, जुडिशियल डिले इज देयर, इट इम्पैक्ट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. ह्यूमन डेवलपमेंट इज आल्सो इम्पैक्टेड. दैट्स व्हाई वी नीड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, है ना. इन सारे प्रॉब्लम कैसे यंग टैलेंट आ जाएगा. देन डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट बहुत ही मेरिट बेस्ड पे होगा. देन वैकेंसीज कैन आल्सो बी रिमूव एंड देन इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी प्रमोट होगा. तो टैलेंट का मोबिलाइजेशन आसान होगा. क्रिटिसिज्म क्या है, इट इज ऑल इंडिया लेवल इज सर्विस का जो भी है, कॉलोनियल लेगेसी है, हैंगओवर है, फेडरल पॉलिटी को इम्पैक्ट करेगा, ब्यूरोक्रेसी के रोल को बढ़ा देगा, है ना. तो ऑल इंडिया सर्विस आई मीन क्रिटिसाइज जो भी वीकनेस फेलियर्स है, तो एवरीथिंग विल बी स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लोकल रीजनल पार्टी विल ऑलवेज अपोज because local languages, the linguistic barrier is also there. So finally how you are going to conclude? Yes, even if there are resistance and criticism, but we all agree that yes, we should have some kind of reforms in the judicial process, है ना. तो इसको बोला गया कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया है.
ठीक, तो वी शुड हैव द, it should not be all India service का creation ये नहीं होना चाहिए, it is expansion of bureaucracy, but ultimately you are increasing the efficiency and productivity of administration, Indian administration. The problem of administration can be solved by more all India servant, है ना. कॉलोनियल हैंगओवर की तरह इसको नहीं देखना, बल्कि यूनिटरी स्टेट है ना, ये वाला एस्पेक्ट नहीं आना चाहिए, बल्कि वी आर ट्राइंग टू act like a instrument. All India servants will act like an instrument of coordination, cooperation, है ना. तो क्वासी फेडरल स्टेट है, वी आर नॉट ए कंप्लीटली फेडरल स्टेट लाइक यूएसए. ठीक, उसी तरह ऑल इंडिया रूरल डेवलपमेंट सेम आइडिया है ना, डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन होगा, डोमेन एक्सपर्टीज होगा, तो व्हाट विल हैपन, थिंग्स विल बी मोर स्पेशलाइज्ड, है ना, वर्क कैन बी डन. ओके, आई थिंक civil services will take after 2 minutes break. Any doubt? Is it clear to everyone? Sir, what do you understand by the term 5 isms? 5 वही है जो प्रॉब्लम है ना, कम्युनलिज्म का है ना, कास्टिज्म का, वही है 5 इज्म. ठीक है सर, क्या आप वो 5 एक बार बता सकते हैं, क्योंकि ना बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है उसमें. वही देखो, कम्युनलिज्म हो गया, कास्टिज्म हो गया, है ना, और सेपरेटिज्म है, और यू आल्सो हेल्प मी थिंक ओवर इट. रीजनलिज्म. रीजनलिज्म, हाँ रीजनलिज्म हो गया, और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, और बताओ. नक्सलिज्म. वेरी गुड, नक्सलिज्म. नक्सलिज्म. वेरी गुड, और एक और बताओ. 5 हो गए सर. सेपरेटिज्म, हाँ ठीक है. मतलब सी ये इज्म हैज बीन मेंशन, यू कैन नॉट नेसेसरी टू राइट ऑल द 5, ओनली इफ यू आर मेंशनिंग लाइक, है ना, एक दो मेंशन कर दिए, दैट इज एनफ, बिकॉज़ थिंग्स आर वेरी स्टैंडर्डाइज, है ना. इज्म वाला कॉन्सेप्ट काफी पॉपुलर है. ठीक है, चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं. एनी अदर डाउट, और कोई? देखो चैप्टर बहुत ही डायनामिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है इफ यू रियली टेक इंटरेस्ट इन द टॉपिक. ओके, चलो 2 मिनट का ब्रेक करते हैं. 7:58 9:58 पे मिलते हैं. 2 मिनट का ब्रेक. Again this topic very important, all of you should try to read it. एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, then things will go into your mind, you can retain it for longer time. ठीक है. Now we are looking at central services. All India service हो गया, है ना, for which all of you are aiming. अब सेंट्रल सर्विसेज में क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट, इतने सारे गवर्नमेंट, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स है. तो एवरी मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट रिक्वायर some kind of personals. They will be recruited through the central civil services rule. They are conducted by central civil services rule. अब DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, व्हाट आर द रूल्स व्हिच गाइड देम, रेगुलेट देम, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है, जैसे मान लो ऑल इंडिया ये सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है. इसमें क्या होगा, जितने भी टॉप लेवल सर्विसेज आता है, मान लो फॉरेन सर्विस है, रेवेन्यू सर्विस है ना, अकाउंटेंट सर्विस है, तो ऑल दीज आर central services, because what we are seeing in the government of India, there are multiple departments, they will need different employees, so they need to be, their conduct has to be regulated. That's why we have civil services conduct rule. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी सिविल सर्वेंट है ना, नॉर्मली दे विल बी वर्किंग इन 10 to 12 स्टेट ड्यूरिंग द इंटायर करियर, तो दे विल बी पोस्टेड ऑन सेंट्रल असाइनमेंट टू द डिफरेंट स्टेट्स. दैट्स व्हाई दिस डिबेट अराइज कि जो सेंट्रल सर्वेंट है, सेंट्रल सिविल सर्वेंट, they are more all India in perspective, they are working in 10 to 12 state in almost a year, but you as a all India servant, you'll work in one state, 1 to 2 state maximum, है ना. तो इसमें क्या है कि इसके कारण डिबेट आता है, बट दैट मे नॉट बी राइट आर्ग्यूमेंट कि ऑल इंडिया सर्वे, है ना, उसके आर्ग्यूमेंट्स को काउंटर भी करेंगे. तो नॉर्मली व्हाट वी आर सीइंग, दैट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, है ना, स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट का जो डिबेट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है. अकाउंट का अलग है, फॉरेन का अलग है, रेवेन्यू का अलग है. ठीक, तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर दे बेसिकली ऑल इंडिया सर्वेंट्स का कंपैरिजन नहीं है ना, दैट इज मच मोर. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, इट इज, जैसे मान लो क्वेश्चन देख लेते हैं, इट इज सेंट्रल सर्विसेज व्हिच इन ट्रू सेंस इज ऑल इंडिया सर्विस रेदर देन ऑल इंडिया सर्विस. क्यों, वही है, जैसे मान लो 10 से 12 स्टेट हो गया, तो ऑल इंडिया सर्विस के बारे में क्या पढ़ा, दे मेंटेन यूनिटी इन इंटीग्रिटी, स्टेबिलिटी इन ऑर्डर चाहिए, है ना. तो लोकल और जो यूनिटी इंटीग्रिटी क्यों जरूरत है उसके बारे में लिख दिए. फिर सिविल सर्वेंट है ना, तो वो लोगों से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता. इट इज द ऑल इंडिया सर्वेंट्स, दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द पीपल, नॉट द सेंट्रल सर्वेंट. दे आर इन्वॉल्व इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी,
डायरेक्ट पब्लिक इंटरफेरेंस कब होता है ना? तो ये पार्टिकुलर स्पेशलाइज फील्ड के लिए होता है, और ये यूनिटी इंटीग्रिटी के लिए काम नहीं करता, बल्कि अपना जो डिपार्टमेंटल वर्क है, डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलिस्ट वर्क है, उसी में इन्वॉल्व है। दे आर नॉट कंसर्न अबाउट यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो लेट्स है ना, इन द एरा ऑफ नेटवर्क गवर्नेंस व्हाट वी आर सीइंग, देयर कैन नॉट बी वाटर टाइट सेपरेशन, नहीं हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस नीड सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटर, इनेबलर, फैसिलिटेटर। तो ऑल इंडिया सर्वेंट क्या है? और एक इनेबलर फैसिलिटेटर है, जितने भी स्पेशलाइज सर्विसेज है उसको फैसिलिटेट इनेबल करता है, और लोगों के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट इंटीग्रेट है ना, इंटरेक्ट करेगा। देन द यूनिटी इन इंटीग्रिटी और स्टेबिलिटी भी देता है, और ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव भी डेवलप करने में हेल्प करता है। ठीक, तो है ना, डिस्पाइट दैट द ऑल इंडिया सर्वेंट हैव ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, बिकॉज दे डील विद द सब्जेक्ट मैटर भी तो काफी हद तक डिफाइन करेगा ना। इफ यू आर डीलिंग विद द टेक्निकल एक्सपर्टीज है ना, स्पेशलाइज्ड फील्ड, उसमें ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से क्या मतलब है? बट इफ यू आर डीलिंग विद दो सब्जेक्ट लाइक द यूनिटी इंटीग्रिटी का मैटर है, स्टेबिलिटी का मैटर है, तो दैट रिक्वायर ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, एंड दैट ऑल इंडिया सर्वेंट कैरी आउट। एंड दे आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, नॉर्थ साउथ जैसे डिवाइड है, या तो इसको नॉर्थ ईस्ट का जो प्रॉब्लम है उसको भी कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। आईएएस ब्यूरोक्रेट, दे आर एक्टिंग लाइक ए स्पेशल बॉन्ड, है ना, पूरे देश को यूनाइट रखने में ऑल इंडिया सर्वेंट का है ना जबरदस्त रोल है। ठीक, तो वी आल्सो टेकल द ऑल इंडिया सर्वेंट, दे विल टेकल डे टू डे एक्टिविटी, लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज जो भी है। तो व्हाट वी सी, ऑल इंडिया merely वर्किंग इन 10 to 12 स्टेट may not make them ऑल इंडिया हैविंग द ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव, है ना। तो दैट इज द मेन आइडिया। ऑल इंडिया वाला पर्सपेक्टिव हो गया। स्टेट सर्विसेज के बारे में हम लोग देखते हैं, स्टेट पीसीएस होता है, स्टेट सिविल सर्वेंट होता है, तो दे है ना। तो ऑल इंडिया सर्विस हैव नॉट अलाउड द ग्रोथ ऑफ स्टेट सर्विसेज। कई लोग ना स्टेट गवर्नमेंट वाले कंप्लेन करते हैं कि जितने भी टॉप लेवल पोस्ट है ऑल इंडिया सर्वेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, दे आर नॉट बीइंग प्रमोटेड, दे आर नॉट गेटिंग द एवेन्यूज टू गेट प्रमोटेड टू द टॉप लेवल ऑफिसर्स। उससे क्या होगा, दे आर कंप्लेनिंग दैट इट हैज curtailed their growth, state civil servant, they are not getting right opportunities, right, opportunity to showcase their talent। तो वो एक एग्जामिन करना है। तो इसको मतलब पॉजिटिव एंड निगेटिव, यानी कुछ सही और कुछ गलत, है ना। यानी ऑल इंडिया सर्वेंट हैज नॉट curtailed, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्वालिटी रिक्रूटमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म, फैक्टर्स, है ना, लोकल सन ऑफ द सॉइल फैक्टर। सो अदर फैक्टर्स, स्टेट सर्विसेज, the reforms are required in state civil services, है ना, which are not only है ना, otherwise all, that's why all India servant remain much more relevant। ठीक है, स्टेट सर्विसेज रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एग्जामिन। ये तो काफी ज्यादा है ना, इसको ज्यादा मतलब बहुत ही आसानी से क्रिटिसाइज किया गया स्टेट सर्विसेज को, कि वाइस प्रेसिडेंट है ना, कोई ज्यादा पावर नहीं, कुछ नहीं। तो अब ये जरूरी नहीं है ना, तो वी हैव टू काउंटर इट आल्सो। एग्जामिन दिया हुआ, दैट मींस दे हैव आल्सो ग्रेट रोल इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट। तो स्टेट सर्विस क्या होगा, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखा, government of India have ministry department, they need people। Similarly state, state government, what will happen, they are also organization, they also need people who can work for the state government। ठीक है, तो they will also have various category of individual, and one third state civil servant are promoted to the all India service, they are integrated, this is how they are also getting promotional avenues, and they can become part of all India service also। ठीक, तो इट इज ब्रिटिश लेगेसी, है ना, ब्रिटिश के टाइम से ही चल रहा है, ऑल इंडिया पर्सनल क्या टॉप पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। तो दे हैव अफेक्टेड द स्टेट सर्विसेज, दैट्स व्हाई देयर इज ए क्रिटिसिज्म, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी कम हो गया, करियर एडवांसमेंट का मिनिमल है, स्लो है, बहुत ही धीरे धीरे प्रमोशन पोस्टिंग हो रहा है। मोरल मोटिवेशन क्या हो जाता है, इससे डाउन हो जाता है ना। हाइजीन फैक्टर एंड मोटिवेटर, हर्जबर्ग का जो आइडिया है, अगेन यू कैन कनेक्ट इट हियर। तो ऑल इंडिया सर्विस हैव अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ state to some extent, yes of course to some extent, and all of us also agree, yes, है ना, to some extent तक it has curtailed। तो बट है ना, इट इज वन सच फैक्टर, बट स्टेट आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट मोस्ट टैलेंटेड पीपल। उसके रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम है, 2-3 साल लग जाता है, रिक्रूटमेंट होता नहीं है। तो ऑल इंडिया सर्विस को स्केपगोट नहीं बना सकते, है ना। स्टेट कैन नॉट मेक द ऑल इंडिया सर्वेंट, दे नीड टू इम्प्रूव देमसेल्फ, है ना। तो उसके अपने टैलेंट स्किल्स को इम्प्रूव करना, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं मिलता है, राइट टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, दो द प्रॉब्लम इन स्टेट सर्विसेज, है ना। तो बाकी कंप्लेन करके ऐसा काम नहीं हो सकता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स, है ना, भाई जैसे इरेगुलरिटी है, स्टेट एग्जाम इरेगुलर बेसिस पे, करप्शन हो रहा है, रिफॉर्म नहीं है ना। तो अगर मान लो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस है, तो व्हाई स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज very poor at the local level, why they are not lacking to, they are not able to attract the meritorious talent individual। so that is, is it because of all India service or there are other factors, है ना, easily you can
रिलेट इट, दैट मींस ऑल इंडिया सर्विस को एस्केप गोट नहीं बना सकता है, ठीक। और ऑलरेडी यहाँ पे देखते हैं 1/3 प्रमोशन दे रहा है, प्रमोशन रेवेन्यूज दे रहे हैं, एंड आल्सो मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ वी आर आल्सो reducing the role of a state. Obviously what will happen, number of services will reduce. Yeah, just a minute, I think recording is not on, no? Yeah, okay, चलो तब तो ठीक। I thought recording बंद था। Yeah, am I audible to everyone? Yes sir, audible. Yes, Okay, ठीक है। तो देखो अभी जो एक तरफ क्या है ना, ये स्ट्रेटजी होना चाहिए कोई भी क्वेश्चन अप्रोच करने का, कि आपको क्या है ना उसके क्रिटिसिज्म को पहले लिख दिया, हाँ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है टू सम एक्सटेंट, है ना। नॉर्मली द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल रिक्वायर दिस काइंड ऑफ अप्रोच, टू व्हाट एक्सटेंट, है ना। कल भी हमने जब भी Q&A किया तो उसमें क्या देखते हैं, जब भी एग्जामिन टाइप का क्वेश्चन हो तो यू नीड टू थिंक इन डायरेक्शन टू व्हाट एक्सटेंट इट इफेक्ट, है ना, और व्हाट आर द ग्रीवेंसेस ऑफ दैट, but you need to also counter it, bring out other perspective, alternate perspective. This is how you write the answer also. तो सर का नोट्स का एक है ना स्पेशल एडवांटेज भी है कि थिंग्स आर ऑलरेडी ऑर्गेनाइज इन ए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, है ना। स्पेशली पेपर 1 के लिए सर का नोट्स है ना मोर देन एनफ, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड, है ना। यू डोंट हैव टू रिफर मल्टीपल सोर्सेज, यू कैन रिलाई ऑन द क्लास नोट्स। पेपर 2 के लिए थोड़ा डायनेमिक होता है तो यू नीड टू बी, है ना। तो पेपर 2 में है ना सनवा सर विल टेक यू, है ना, डायनेमिक एस्पेक्ट जो भी है, तो लेटेस्ट अपडेटेड नोट्स ही विल बी डिस्कसिंग, उनका खुद का स्ट्रेटजी होगा, दैट यू कैन गो थ्रू इट। अब बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है वो हम लोग, है ना, जनवरी में कर लेंगे, ताकि है ना यू आल्सो डोंट हैव टू मच रश। जो रश इंपॉर्टेंट था, जो टेक्निकलिटीज थी, दैट वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द conceptual or theoretical part. Now things are more related to GS, and parallelly you can continue with your GS preparation also, and then you can also carry on the PubEd preparation, है ना। आराम से करेंगे, जनवरी में कंप्लीट करेंगे आराम से, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिनिमाइज, है ना, नंबर ऑफ सर्विसेज ऑलरेडी कम हो रहा है। उसके बाद हम लोग व्हाट वी वांट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कम कर रहे हैं, है ना। तो वी हैव टू दे आर आल्सो बीइंग रिफॉर्म लाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, अच्छा करना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाना पड़ेगा। हर स्टेट के अंदर विड्रो विल्सन जैसा इंडिविजुअल चाहिए, है ना। तो वी नीड आल्सो, यू नो, वी आर लुक, यू नो, इंडिया इज लुकिंग फॉर Indian Woodrow Wilson who can, you know, bring out some kind of innovative suggestions to the recruitment or reform process, ठीक है। तो promotional opportunity, तो overall what we are seeing, a state, you know, a state will have to work upon their state administrative machinery need to be reformed, है ना। तो जैसे डोमेन एक्सपर्टीज है वो सब वाला आइडिया, या जो रैंक क्लासिफिकेशन से हम लोग पोजीशन क्लासिफिकेशन की ओर जाना, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क, I know, for example, in a coalition era, what we are seeing, proliferation of ministries and department, that should be avoided. And just for political reason, you are creating multiple ministries and department. So there are multiple issues at the state service, and a lot of focus has been on the central civil servant, and all India servant, but there is lack of focus on the reforms in the state service. They are the, you know, or much closer to the people. A state civil servant or a state administrative machinery need to be reformed, and some of the states have reformed, for example Kerala, Tamil Nadu. So there are various model in the different states, best practices that should be adopted by other states, ठीक है। इसलिए फाइनेंस कमीशन कई बार परफॉर्मेंस ऑडिट, है ना, परफॉर्मेंस के आधार पे भी फाइनेंशियल एलोकेशन करता है, दैट इज आल्सो इनोवेटिव आइडियाज, ठीक। देन लोकल लेवल आल्सो, है ना, लोकल कैडर इज रिक्वायर्ड, लोकल सर्विस डिलीवरी इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वी अडॉप्टेड आफ्टर 73rd and 74th amendment, तो लोकल सर्विसेज आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, है ना। दैट्स व्हाई वी आर स्टिल, यू नो, लोकल ऑफिस, लोकल सर्विस या पंचायत क्या बोलेगा कि ये स्टेट गवर्नमेंट के सारे लोग ही काम करते हैं, है ना। वी शुड हैव आवर ऑन रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी, वी शुड हैव स्पेशलाइज्ड कैडर, लोकल कैडर होना जरूरत है। स्टेट कैडर ऑफिसर्स ही वर्किंग इन लोकल कैडर, तो लोकल कैडर क्या कंप्लेन करेगा, स्टेट ऑफिसर्स दे आर कर्टेलिंग द ग्रोथ ऑफ लोकल, यू नो, लोकल ऑफिसर्स, तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है। तो देयर आर, यू नो, डिफरेंट ग्रीवेंसेस। तो स्टेट लेवल, लोकल लेवल, है ना, पंचायत लेवल और यूनियन लेवल, तो एवरीथिंग हैज टू बी रिफॉर्म। एट द लोकल बॉडीज आल्सो वी नीड टू हैव द रिफॉर्म, रिक्रूटमेंट होना चाहिए स्पेशलाइज, वहां भी क्या है लोकल लेवल पे अलग अलग स्पेशलाइज सर्विसेज, है ना, जरूरत है, तो वहां पे भी रिक्रूटमेंट में चेंज करने की जरूरत, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट, है ना, तो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट जैसे इसका कंसेप्ट क्या है, व्हाई डू वी नीड रिक्रूटमेंट, अलग अलग कंट्री में क्या अप्रोच है ना। कंटेम्परेरी डेवलपमेंट क्या इंडिया में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस का। आफ्टर इंडिपेंडेंस को हमेशा कैटेगराइज करना, देखो ये फेज, है ना, थिंग्स विल बी रिपीटेड, ये फेज हमेशा कॉमन है 50-70 का दौरान,
1970 से, है ना, तो कई बार 1990 तक और 2010 तक या 2014 तक, तो उससे आप रिलेट कर सकते हो। 2-3 फेज में बांट के एनालाइज करना आसान हो जाता है। फिर अलग अलग कमिटी का 1-2 रिकमेंडेशन आपको याद करना है, स्पेशल यूनिक रिकमेंडेशन ऑफ ईच कमिटी, नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेम्बर एवरीथिंग, है ना। 1-2 कमिटी भी आपने याद कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ। रिसेंट डेवलपमेंट क्या है और सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देन कंसेप्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, तो अब क्या होता है अल्टीमेटली, इनिशियली ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या था, कीप द रस्कल्स आउट, है ना, तो दे वांटेड टू एलिमिनेट द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो क्या होगा, मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, है ना, एस्पायर सिस्टम खत्म करना है। तो क्या होगा, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, नेक्सस, ये सब खत्म कब होगा, जब टैलेंटेड इंडिविजुअल, मेरिट बेस्ड ऑब्जेक्टिव एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज देयर। The main purpose was to eliminate the political interference. That's why Woodrow Wilson idea again become important, है ना। टेलर का आइडिया इंपॉर्टेंट हो गया, तो दोनों ने रिक्रूटमेंट के बारे में, विडो विल्सन ने, टेलर ने और मैक्स वेबर ने बात किया। यू ब्रिंग आउट दोज कंटेंट, है ना, दैट विल जस्ट यू मेंशन, इवन इफ यू मेंशन दोज एस्पेक्ट दैट विल एनफ, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एंशियंट टाइम से इवॉल्व हो रहा है। कौटिल्यन जो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वहां पे भी रिक्रूटमेंट का पहले क्या तरीका था, है ना, अब क्या मॉडर्न टाइम में क्या तरीका है ना। तो दीज आर जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, वैकेंसी आइडेंटिफाई करोगे, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एंड एडवर्ट एवरी ईयर यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्वेंट दे एडवर्टाइज फॉर द डिफरेंट पोस्ट, एग्जाम होगा। तो दीज आर जस्ट टू अंडरस्टैंड, है ना, इसको नोट्स में लिखने की कोई जरूरत नहीं। कैसे आप, ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एडवर्टाइजमेंट होगा, प्रमोशन, किस प्रकार एग्जाम हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है ना। तो सिमिलरली वहाँ वेस्टर्न कंट्री में भी हम लोग क्या देख रहे हैं, वहाँ ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, है ना, क्योंकि वहाँ पे पोजीशन क्लासिफिकेशन है, तो दे विल, है ना, गिव एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस, है ना। तो एक्सपीरियंस के आधार पे, जैसे मान लो, और इंडिया में क्या है, हम लोग यंग यूथफुल पॉपुलेशन, है ना, जनरलिस्ट को ज्यादा रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे यूएस के अंदर क्या एक्सपर्टीज, है ना, क्योंकि पोजीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। तो पोजीशन में हम लोग क्या देखा कि हर पोजीशन का स्किल, क्वालिफिकेशन, सब जो रिक्वायर्ड, एवरीथिंग इज clearly defined. You need to match the skills available with the skills required, है ना। पोजीशन ट्रांसफर ये हो गया। कुछ अलग अलग कंट्री का प्रैक्टिस दिया हुआ है। यूएस के अंदर कौन है, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, वो पोजीशन क्लासिफिकेशन। फ्रांस के अंदर क्या, एनडीए टाइप सिस्टम। एनडीए में क्या होता है, 3 साल ट्रेनिंग हो गया, तो पूरा जो ग्रेजुएशन जो होता है ना, हायर कॉलेज, तो 3 साल में उधर ट्रेनिंग होगा। फिर उसके बाद उस सारे ऑफिसर्स को, है ना, एग्जाम क्वालिफाई करके देन यू गो फॉर, है ना, जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, है ना, वी हैव एनडीए प्लस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो दोज हु आर गोइंग टू द एनडीए आफ्टर 12th, 3 साल यहाँ होगा, 1 साल इधर होगा। कई लोग क्या होता है, डायरेक्टली ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं मिलिट्री में, तो वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाएगा, वो 1.5 साल के लिए ट्रेनिंग उसको होता है। दे ऑल्सो बिकम ऑफिसर, लेफ्टिनेंट से फिर, है ना, जितने भी ऑफिसर हम लोग देखते हैं। तो फ्रांस में भी, है ना, ये सिस्टम है इस टाइप का। यूके के अंदर क्या, वहां दे हैव द सिविल सर्विसेज कमीशन, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी इज सिविल सर्विसेज। तो यू कैन मेक द कंपैरिजन, उसका क्या, मैकाले कमेटी का इंडिया में जो काफी पैटर्न उसी के आधार पे ट्रेवेलियन कमेटी है। तो अब जरूरत नहीं है ना, ये कंपैरेटिव चार्ट आप बना सकते हैं, यूएस, यूके और अलग अलग कंट्री का, 1-2 स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है और नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, दैट विल बी एनफ, है ना। तो उसमें डिटेल उतना करने की जरूरत नहीं है। तो सिग्निफिकेंस क्या है रिक्रूटमेंट एज ए कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, कौटिल्य के टाइम से, है ना। द क्वालिटी ऑफ पीपल डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसको किसी भी टाइम में डाल दो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में डाल दो, दिस स्टेटमेंट रिमेन रेलेवेंट। तो लेकिन अब इसको मान लो एग्जाम ही ना आ गया, द क्वालिटी ऑफ पीपल डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इज इट 100% ट्रू, है ना। टू व्हाट एक्सटेंट quality of people determines the quality of administration, those kind of thought process that goes into your mind, है ना, वो होना जरूरी माइंड में। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या, टू व्हाट एक्सटेंट क्वालिटी ऑफ पीपल विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इज देयर, क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन is one factor, is the outcome, and one variable is quality of paper. That means there are other variables also that determine the quality of administration. अब वो क्रिटिकल एग्जामिन अगर स्टेटमेंट को आ गया, तो ऐसे आपको सोचना है कि to what extent quality of people determine the quality of administration, what are the other factors, है ना, रिस्क का सिस्टम एंड सब सिस्टम जो हमने थे का, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम, the nature of government, quality, ideology of the political party. So there are other aspects also that determine the quality of administration, but the quality of people is one of the most important significant part of quality of administration. इसको कैसे रिलेट करेंगे, विड्रो विल्सन का जो स्पाइल सिस्टम का क्रिटिसिज्म था,
to relate it, है ना. This is how you can relate various other aspect of chapters in the topics that you are discussing or analyzing. ठीक है. This is how you analyze. इसलिए एक दो बीच में एग्जांपल है ना, just to unravel how you have to think over. ठीक है. तो करियर बेस्ड सर्विसेज है ना, लेटरल एंट्री के बदले अभी क्या लेटरल एंट्री का डिबेट आ गया. तो वो क्या है, क्यों है, क्रिटिसिज्म क्या है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका व्हाई इट इज नॉट एबल टू ब्रिंग आउट द राइट पर्सन एट राइट पोजीशन, व्हाई डू यू नीड टू हैव द तो नए लेटरल एंट्री की जरूरत क्यों है. ठीक है. तो रिक्रूटमेंट इज ए सोवरेन फंक्शन. सिंपल है, स्टेट का काम होता है. सोवरेन मींस वाइटल फंक्शन ऑफ द स्टेट होता है. स्टेट विल रिक्रूट. तो मेरिट क्यों जरूरत है, डेमोक्रेसी मेरिट का क्यों जरूरत है. नहीं मेरिट होगा तो क्या होगा, डीस्टेबलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा. मेरिट से क्या होगा, एक सेंस ऑफ जस्टिस आ रहा है ना. व्हाट एवर रिजल्ट इज बीइंग पब्लिश, ऑल ऑफ यू हैव द सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ टैलेंटेड था इसलिए सिलेक्शन हुआ. ठीक है. तो मेरिट दे आर द गार्जियन. मेरिट इज द दे आर द गार्जियन ऑफ सोसाइटी, यूनिटी इंटीग्रिटी में काफी हेल्प करता है. तो व्हाट इज द कंटेम्पररी डेवलपमेंट, क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन, आईसीटी, इतने सारे रिफॉर्म्स आ गए. जितने भी चैप्टर 1 के टॉपिक्स हमने देखा, everything is impacting the nature of recruitment. Now we are looking for the different individuals with a different set of quality, skills, knowledge. They look at the report when by the parliamentary committee on the composition of the individuals who are being recruited to the bureaucracy now in the contemporary time. Engineers, doctors, क्या composition है, many specialists are joining this, है ना, generalist services. तो क्या चेंज है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो सब हमको कंपटीशन बढ़ गया है ना. तो अब क्या है ना, पूल ऑफ कैंडिडेट, टैलेंटेड पीपल दे आर इंक्रीजिंग. देयर इज आल्सो लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर. एंड आल्सो रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल आल्सो, है ना. तो पहले बहुत लंबा चलता था, 2-3 साल चलता था. अब क्या 1 साल में हो रहा है. लेकिन स्टेट लेवल पे अभी भी प्रॉब्लम है. नाउ देयर इज आल्सो प्रेशर फ्रॉम द लेटरल एंट्री. क्या हो रहा है, एक तरफ से है ना ब्यूरोक्रेट्स प्रमोट होके जा रहे हैं, ऊपर से क्या हो रहा है, दूसरे से लेटरल एंट्री के थ्रू बंदे आ रहे हैं. तो अगेन देयर इट इज पुटिंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन परफॉर्मेंस प्रेशर ऑन द ब्यूरोक्रेट, कि भाई काम करो नहीं तो तुमको रिप्लेस करा देंगे लेटरल एंट्रेंट से, बिकॉज दे आर मोर टैलेंटेड, मोर नॉलेजेबल और इनोवेटिव आइडियाज लेके आ रहे हैं. तो दे नीड टू कम्पीट विद द आउटसाइड टैलेंट, है ना. कि पहले जैसा क्लोज सिस्टम नहीं रहा. नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक सिंक्रोनाइज करना जरूरत है. तो लॉट ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. ठीक है. एंड देन वी हैव द रिक्रूटमेंट. बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था और आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग देख रहे हैं कि जो मैकले कमेटी का रिकमेंडेशन है ना, क्या क्या रिकमेंडेशन दिया. जनरलिस्ट वाला अप्रोच, वहीं से जनरल एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए, एग्जामिनेशन दोनों, है ना. तो उस समय तो खैर ब्रिटिश बायसनेस था, यूरोपियन था, तो दे डोंट वांट टू बी एग्जाम टू बी हेल्ड इन इंडिया, है ना. यूके में वो बायसेस है, यूरोपियंस को रिक्रूट करना था. तो अब दे वर नॉट, इंडियंस वर अलाउड टू अपील, है ना, अप्लाई इन एग्जाम, अप्लाई कर सकता था. ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग नॉर्मली यूके में ही मिलता था, बाद में इंडिया में शिफ्ट हुआ. लेकिन एक जो इलीट सर्विसेज है, लॉयलिटी टू द ब्रिटिश, है ना, गवर्नमेंट, वो इम्पोर्टेंट था. एंड दे वांटेड टू अट्रैक्ट द मेरिटोरियस टैलेंट, इंडिविजुअल, टैलेंटेड इंडिविजुअल हु कैन गो एंड स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट. कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन को, है ना, स्ट्रॉन्ग कैसे बना के रखा जाए. दे नीड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट, है ना, जो डायरेक्टली, जो हम बोले ऑब्जेक्टिवली काम करे, मेरिट बेस्ड के सिलेक्शन हो. And they should not, the Weberian bureaucracy का जो characteristic, they should be cog in the wheel. Whatever order is being given, they must follow it. Loyalty should be towards the colonial government, है ना. Those are the rationality behind all these recommendations, है ना. Even if you understand the rationality behind the British government or colonial administration, you can easily mention, bring out these recommendation, है ना, आसानी से relate कर सकते हैं. इंडिया में जो अभी देखो वही फाउंडेशन बना हमारा रिक्रूटमेंट का आफ्टर इंडिपेंडेंस. जनरलिस्ट है, रैंक बेस्ड है, स्कॉलस्टिक एग्जाम होता है ना, कैच देम यंग वाला फिलोसफी चल रहा है. तो रिकमेंडेशन क्या है, अलग अलग कमिटी आया, एक्सटेंशन कमिटी, तो अलग अलग कमिटी ने, यू कैन मेक द टाइमलाइन, फ्लो चार्ट बना के, है ना, उसके की रिकमेंडेशंस को आप लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई आप बाद में इंडिया में भी एग्जाम होना शुरू हो गया. इट वाज डिमांड ऑफ नेशनल मूवमेंट आल्सो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो, दे डिमांडेड कि यहाँ भी होना चाहिए. अब जनरलिस्ट सर्विस अभी भी कंटिन्यू हो रहा है. स्टेट तो नेचर, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क दैट वी हैव फॉलोड फ्रॉम द ब्रिटिश टाइम ओनली, है ना. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिन पढ़ते हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितने सारे फैक्टर्स हम लेके आए. तो ब्रिटिश के टाइम, ये जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है ना, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत, उसको आपको रिलेट करना है हियर.
है ना। तो यू कैन कनेक्ट मेनी ऑफ दोज आइडिया कि रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर सिविल सर्विसेज अलग अलग कमीशन कब करना, मेरिट बेस्ड कब आया, पहले क्या अपॉइंटमेंट होता था, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म के आधार पे। यूरोपियंस क्या करते थे, है ना, तो सर्विसेज को भी बांट रखा था, इंडियंस के लिए ओपन नहीं था कुछ, है ना, कोऑर्डिनेटेड, यूरोपियंस के लिए रिजर्व कर रखा था। तो दैट वाज नॉट मेरिटोरियस, बाद में मेरिटोरियस हो गया, एग्जाम सिर्फ उधर ही हो रहा था, बाद में इंडिया में शिफ्ट हो गया। तो मोर टैलेंट पूल, दैट मीन्स more and more people from the diverse background can apply to the all India service, है ना। What will happen ultimately, the quality of people will determine the quality of governance, that is also reflected in colonial journey और experience। after independence क्या हुआ, भाई आर्टिकल हमने कॉन्स्टिट्यूशन, पटेल साहब बहुत ही फेवर में थे, भाई होना चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी, स्टील फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो जनरलिस्ट क्राइटेरिया को कंटिन्यू किया। फिर फेजेज में हम लोग देखते हैं 1950 से 70 का क्या था, है ना। तो हम लोग क्या देखते हैं, 3 डिफरेंट एग्जाम, पहले अलग अलग एग्जाम होता था, ठीक है, हिंदी मीडियम में। तो बाद में कोठारी कमीशन है ना, दिस इज अगेन लैंडमार्क कमिटी रिकमेंडेशंस कि भाई कॉमन एग्जाम का पैटर्न आ गया, है ना। तो साइंस एज ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड हो गया। तो इससे क्या होगा, डाइवर्स pool of the individuals who are coming from diverse background has increased, तो many people have become eligible। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ इससे अपन कि वी आर मैकाले कमेटी के रिकमेंडेशंस को वी आर ट्राइंग टू गो अवे, इंडियन लेगेसी आ रहा है ना, पीपल फ्रॉम डिफरेंट एक्सपर्टीज और स्पेशलिस्ट बैकग्राउंड दे आर आल्सो एंटरिंग इनटू द सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो टैलेंटेड लोग को अट्रैक्ट करना, बाद में सतीश चंद्रा ने, है ना, इसमें ऐसे वैसे को इंक्लूड करा दिया, ऐसे पेपर भी आ जाए। तो वन एक दो रिकमेंडेशन आपको याद करें, अलग कमेटी ने क्या बोल दिया, भाई 40% है ना, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम, तो अगर अधिकतर ग्रेजुएट स्टूडेंट जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले ही नहीं रहा है, तो व्हाट इज नीड ऑफ रेशनैलिटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो ही क्वेश्चन द रेशनैलिटी ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो उसके बाद एक ऑप्शनल हटा, पहले 2 ऑप्शनल होता था, अब एक ही ऑप्शनल हो गया, है ना। बाद में बासवान कमेटी ने भी बोला कि ऑप्शनल में भी पबेड जैसा सब्जेक्ट को कंपलसरी कर दो, ब्रिंग द कंटेंट ऑफ पबेड इनटू कॉमन बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर, you should have the expert administrative understanding और knowledge। तो ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस आ रहा है। तो एनडीए टाइप है ना, रिक्रूटमेंट का भी सजेशन आया। तो वेरियस कमिटी नो दे रिकमेंड डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो देखो प्रीलिम्स में पहले ऑप्शनल होता था, अलग कमिटी ने अलग कर दिया उसको, हटाओ इसको, प्रीलिम से बाहर करो, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट इंट्रोड्यूस करना है। सिग्निफिकेंस क्या मतलब, क्या आपको करना है कि पार्टिकुलर कमिटी, है ना, किस ईयर में था, उसका है ना एक दो रिकमेंडेशन हाईलाइट कर दिए, उसका सिग्निफिकेंस आपने मेंशन कर दिया, उससे ओवरऑल एक जनरल आइडिया भी लिखना है। सिग्निफिकेंस इज सब्जेक्टिव थिंग, इट इज एनालिटिकल, यू कैन मेक योर ओन ऑब्जर्वेशन आल्सो, लेकिन स्पेसिफिक रिकमेंडेशन यू कैन नॉट मेक द चेंज, वो स्पेसिफिक आपको वही लिखना पड़ेगा जो पार्टिकुलर कमिटी या कमीशन ने बोला है, ठीक है। हम लोग क्या देख रहे हैं, कोठारी कमेटी के बाद कई सारे कमेटी सेटअप हुआ, ओवरऑल परफॉर्मेंस में और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में काफी चेंजेस हुआ, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, इन टर्म्स ऑफ नाउ वी आर हैविंग यू नो, जो जीएस पेपर का फोकस क्यों बढ़ा है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, है ना, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कमिंग एंड दे आर कॉम्पिटिंग ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म, है ना। इक्विटी का भी पैटर्न को प्रमोट किया जा रहा है, ऑप्शनल हटाने से वो भी एक एडवांटेज हुआ, ठीक है। 2008 का है, पोटा कमेटी एक दो रिकमेंडेशन कर दिए, फिर एआरसी 2 का रिकमेंडेशन। तो मोस्टली जैसे कोठारी कमीशन है, उसके बाद एआरसी 2 पे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए, दे आर द मेजर रिकमेंडेशंस, है ना। तो उसमें एनडीए टाइप पैटर्न पे बोला है, तो और फिर उसको बाद में ट्रेनिंग हो, रिक्रूटमेंट हो, तो एक दो मेंशन कर लिए काफी है। सेकेंड फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई प्रीलिम्स मेंस हेल्ड टुगेदर, ऐसा भी रिकमेंडेशन है, मेंस और प्री एक साथ करा दो। अब प्री में जो मिनिमम क्वालिफाई करेगा उसी का जीएस चेक होगा मेंस का। तो there are multiple suggestions which may be too idealistic, है ना, may not be practically applied, ठीक है। कुछ लोग कुछ रिकमेंडेशन इसलिए रेडिकल, है ना, एक्सेप्ट हुआ, कुछ है ना जो इम्प्रैक्टिकल था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो अब ये वेदर रिफॉर्म्स यू नो रिक्रूटमेंट मैचेस देन, अब ये क्वेश्चन आता है, दीज आर द क्वेश्चन दैट शुड कम इन योर माइंड, वेदर यू नो डू यू सेटिस्फाइड विद द current recruitment process, does it meet the need and challenge of 21st century, वेदर यू नो, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस पे फोकस होना चाहिए या, है ना। तो बिजनेस सेक्टर ये सब में क्या है कि अलग अलग चीज हो रहा है, ऑप्शनल कंटिन्यू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इंटरव्यू में कंपलसरी करो, ये करो, व्हाट, है ना। तो एंड देन मेरिट प्रिपेयर, तो दीज आर सब्जेक्टिव एनालिसिस दैट यू हैव टू डू। वन नेशन वन एग्जामिनेशन वाला कॉन्सेप्ट भी आजकल काफी डिबेट में चल रहा है। जैसे अग्निवीर आया, तो क्या हम, है ना, कर्मवीर वाला कॉन्सेप्ट ला सकते हैं क्या, है ना। इन ब्यूरोक्रेसी आल्सो कैन वी ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मवीर, आईपीएस, है ना, प्रकाश सिंह ने सजेस्ट किया, एडिटोरियल आ गया। तो नाउ दे आर आल्सो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, एकदम ऐसा नहीं चाहिए टू मच कॉम्प्लिसेंसी इज नॉट देयर, आर्टिकल 311 में जो मिल रहा है ब्यूरोक्रेट्स,
तो देयर आर लॉट ऑफ रिफॉर्म्स व्हिच आर बीइंग डिबेटेड इन द करंट टाइम। ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि अब देखो 2014 के बाद जो है ना स्पेशली रिफॉर्म्स, लाइक अभी क्या ओवरऑल 10% वेटेज भी दे दिया अब ट्रेनिंग के बाद, है ना। योर 10% वेटेज इज गिवन आफ्टर पोस्ट ट्रेनिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग हो उसमें परफॉर्मेंस भी। अदरवाइज ट्रेनिंग वाज ए काइंड ऑफ पेड हॉलीडे, है ना। वहां पे जाकर सब लोग मस्ती करते थे, ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते थे। अब 10% वेटेज डाल दिया। तो सीसेट पेपर में भी हम लोग देख रहे कुछ लेटरल एंट्री भी 2016 के बाद शुरू हो गया सेक्रेटरीट लेवल ऊपर। तो व्हाट इज ऑल द लेटरल एंट्री दे आर कॉम्पीटिंग विद द ब्यूरोक्रेट विल हैव टू कम्पीट विद द लेटरल एंट्री। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बढ़ रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस अल्टीमेटली कंसर्न वही है, ठीक है। तो अभी रिसेंट टाइम में वासवान कमेटी और निगवेकर कमेटी आया है ना 14 और 16 में। तो एक रिकमेंडेशन क्या है ना, क्या रिकमेंडेशन है उसका, 1-2 रिकमेंडेशन आपको याद करने हैं, उतना ज्यादा डिटेल करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। रिस्क का आइडिया, डिफ्रैक्शन, है ना। सोसाइटी जितना स्पेशलाइजेशन हो रहा है तो है ना रिक्रूटमेंट कैन नॉट बी जनरलिस्ट एट द वन टाइम, है ना। वन साइड के हम लोग बात करें वी वांट टू बिकम डिफ्रैक्टेड सोसाइटी, तो वहां पे स्पेशलाइज सर्विसेज की जरूरत है, स्पेशलाइज रिक्रूटमेंट होना चाहिए, है ना। अभी क्या जनरलिस्ट टाइप हो रहा है, स्कॉलस्टिक एग्जाम है, इट इज ए प्रैक्टिकल, है ना, जॉब ओरिएंटेड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म। लेटर एंट्री का एडवांटेज बता दिए कुछ, है ना। तो अब ये इन फ्यूचर दैट इज लेटरल एंट्री इज गोइंग टू इंक्रीज, डोमेन स्पेशलाइजेशन जो एआरसी ने रिकमेंड किया, क्योंकि इनोवेशन है, चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहा है। तो वन सिंगल एग्जाम कैन नॉट बी एनफ टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट मेरिट, है ना। तो सोसाइटी में इतना कॉम्प्लेक्सिटी आप आसानी से, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन है, यूपीएससी एंड स्टेट सिविल सर्विस, उसके बारे में उसको क्या ऑटोनॉमी दिया हुआ है, इंडिपेंडेंस दिया हुआ है ना। तो बेसिक फीचर पॉलिटी में पढ़ते हैं उसको आप, उसका रोल एंड फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट को एडवाइज करना, रिक्रूट करना, प्रमोशन में भी हेल्प करना, एनुअल रिपोर्ट्स देना। तो दीज आर वर्किंग ऑफ यूपीएससी। अब हाउ टू व्हाट एक्सटेंट यूपीएससी हैज वर्क एज ए वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, है ना। तो ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इम्पार्शियलिटी है, तो ब्रिंग आउट दोज एस्पेक्ट, है ना। हाउ इट हेल्प इन इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, व्हाट आर द रिफॉर्म्स, है ना। तो वो आप पैरामीटर पे आपको जज करना है, ठीक। तो जैसे इंडियनाइजेशन का एग्जांपल, जैसे हिंदी मीडियम है, लोकल शेड्यूल 7 के लैंग्वेज, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विसेज दैट वाज ब्रॉट बाय द यूपीएससी। वीकनेस क्रिटिसिज्म क्या है, कंपोजिशन क्लियरली डिफाइंड नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी ट्रांसपेरेंसी अपॉइंटमेंट प्रोसेस में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इज दैट। तो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसको बाइसनेस आ जाता है ना। एग्जाम में भी है ना मार्क्स वार्क्स को लेके या कॉपीज को लेके प्रॉब्लम है, ठीक। कम्युनिकेशन क्लियर कर, टाइमली, जब पीटी का रिजल्ट आ गया मार्क्स बाद में आ रहा है 1 साल बाद। तो देर आर मल्टीपल इश्यूज इन द वर्किंग ऑफ यूपीएससी आल्सो, you can think upon. Yeah, am I audible? Yes, sir. Okay, okay. ठीक है, then just we'll be concluding in 5 minutes, don't worry. तो इसमें हम लोग यही है कि यूपीएससी का जो जनरल क्रिटिसिज्म है ना, स्पेसिफिक कुछ है ना, स्पेसिफिक आपको रिक्रूटमेंट से लेकर या सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर या वर्किंग ऑफ यूपीएससी है, मेंबर का अपॉइंटमेंट है, इंडिपेंडेंस है, उस पे आपको लिखना है, ठीक है। और उसको ब्रॉडर टर्म में, जैसे अलग अलग कंट्री में क्या प्रैक्टिस है, ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, उससे आपको रिलेट करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में अडॉप्ट करना चाहिए, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का आइडिया है, वो सबको लिंक करना है। उसी तरह स्टेट पीसीएस है ना, यूपीएससी की तरह स्टेट लेवल पे भी होता है, वो भी है ना, उसका भी काम ऐसा है। सम स्टेट पीसीएस आर इवन एडवांसर देन यूपीएससी आल्सो, दे शेयर द इवैल्यूएटेड कॉपीज, है ना, दे आल्सो गिव लॉट ऑफ, तो लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लॉट ऑफ रिफॉर्म्स हैव आल्सो बीन इनिशिएटेड बाय स्टेट सिविल सर्वेंट, ठीक है। ओके, ट्रेनिंग वुड यू लाइक टू कंटिन्यू या कल करना है? कल कर लेंगे सर। अच्छा कल, लेकिन बस वही है कि ना ऑल ऑफ यू हैव टू रीड, है ना। मैक्रो थीम जो मेजर हमने अंडरस्टैंड किया ना, मैक्रो फ्रेमवर्क जो डिस्कस किया आज हमने, तो दैट वाज इंपॉर्टेंट कि भाई थिंकर को कैसे रिलेट करना है। मेन आइडिया वाज हाउ यू आर रिलेटिंग द थिंकर्स आइडिया, हाउ यू आर रिलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, हाउ यू आर रिलेटिंग द चैप्टर 1 आइडिया, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन चौथा जो है ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है, उसमें सिस्टम एंड कंटीजेंसी थ्योरी, सीपीए हो गया, है ना, सीपीए एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो दोज एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इंटर रिलेटेड विद दिस टॉपिक। तो इसलिए एक बार है ना, प्लीज एवरीवन शुड ट्राई टू गो थ्रू द, है ना, नोट्स एटलीस्ट वंस, है ना, सो दैट वी कैन आल्सो पिक अप एंड देन इंटरलिंकेजेस पे थोड़ा ज्यादा वर्कआउट करेंगे। ओके, या एनी डाउट? ओके, वी कैन कंक्लूड नाउ इफ देयर इज नो डाउट। हाँ प्लीज।
Sir, my institute made me write a lot of recommendations. नॉट रिक्वायर्ड, है ना। देखो हर कमिटी का जो यूनिक रिकमेंडेशन है ना, और जो एक्सेप्टेबल भी हुआ है, जो एक्सेप्ट हुआ है ना, मोस्टली। और रेडिकल इम्प्रैक्टिकल सजेशन है, मतलब नहीं है, वो लिखने का टाइम भी नहीं मिलेगा। क्वेश्चन हमने देख ही लिया, कभी भी डायरेक्ट और ऐसा कमिटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ओनली थिंग इज रिक्रूटमेंट इन जनरल, उसमें क्या आपको यू डोंट हैव टाइम आल्सो, यू डोंट हैव स्पेस आल्सो टू मेंशन ऑल द कमिटीज। अलग अलग फेज में जो बांटा ना, 3 फेज में, उस फेज के एक एक दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन। देखो 1970 के पहले जो मेजर, वही कॉलोनियल लेगेसी, कोठारी कमीशन, है ना। फिर उसके बाद जो 2014 के बाद, तो आप एक दो कमिटी, उसके एक दो रिकमेंडेशन, दैट्स ऑल। कमिटी का भी क्रिटिकल एग्जामिन करने की सिग्निफिकेंस है नहीं है, मतलब नहीं है। वो सर ने भी नोट्स में अननेसेसरी लिखा है, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, Okay, sir. चलो ठीक है, फिर विल कंक्लूड। गुड नाइट एवरीवन। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, good night.